चेक हेलो चेक। बीटी गैंग और उडपी क्रिकेटर्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज टॉस के लिए आ जाए। बीटी गैंग एंड उडपी क्रिकेटर्स प्लीज कम फॉर द टॉस इमीडिएटली। चेक 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 हेलो हेलो। ये लास्ट कॉल है। 7:31 हो रहे हैं। 7:33 को अगर टॉस नहीं हुआ तो दोनों टीमों का एक एक ओवर कम होगा। ये लास्ट कॉल। बीटी गैंग ये लास्ट कॉल है आपके लिए, आप क्योंकि आपका सामने वाला जो कैप्टन है वो यहाँ पे मौजूद है। बीटी गैंग प्लीज लास्ट कॉल। उडपी क्रिकेटर्स का कैप्टन यहाँ पे मौजूद है, प्लीज। चेक हेलो हेलो चेक। ये लास्ट कॉल पज्जू भाई, क्योंकि बहुत ऑलरेडी वो वहाँ पे खड़े हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें।
सकते हैं सुपर 8 का पहला मुकाबला, जहाँ पे उडुपी क्रिकेटर्स यानी आज वो रुम्बा रुम्बा देखने को मिलेगा। आज बहुत कुछ लेके आए हैं ये, और ये रुम्बा रुम्बा बहुत होने वाला है आज। क्या ढोल ताशा सब लेके आए हैं और ये बजने वाला है, और ये क्या सामने वाले को बजाएंगे। आज देखना होगा, मजा आने वाला है, तो आप कहीं ना जाए। और इस पहले मुकाबले में आप सभी का स्वागत। ये भोपू आज यही बयां कर रहा है कि भाई आज उडुपी में दिवाली मनाई जाने वाली है, और उडुपी क्रिकेटर्स, क्योंकि उडुपी ये नाम ही कुछ खास है। उडुपी रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर उडुपी जहाँ पे पहला 25 लाख का टूर्नामेंट, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टेनिस का खेला गया, वो था उडुपी। और वही उडुपी से बिलोंग करने वाले सारे खिलाड़ी आज फिर से इन एक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है इस आखिरी दिन में, सुपर 8 में। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन खेला जाएगा। ये देखिए, ये सारे विजन्स आप देख रहे हैं, उडुपी क्रिकेटर्स अपने पूरे जोर शोर से आज तैयार है आज इस पहले क्वार्टर फाइनल के लिए। आप सभी का स्वागत है। हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं ना जाए, देखते रहे प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये मुकाबला नंबर आज के दिन का पहला। थोड़ी देर के बाद इन एक्शन है। आपने अगर अभी भी ACL दोहा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और श्री लाइव वीडियोस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत सारे जो एक्शन हैं आपके साथ हम देख रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करें। धन्यवाद। ये मैंने पहले ही बताया था, आज उडुपी वाले हैं पूरी तरह से तैयार है। आज ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, और बहुत कुछ बजने वाला है। क्या ये आज बल्लेबाजों को भी बजाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज मजा है। उडुपी में अनुमान मुझे लगता है ढोल कम देखा जाता है, वहाँ पे उनका जो पारंपरिक वाद्य है कुछ अलग है। लेकिन आज ये पंजाब से ढोल लेके आए हैं, और उडुपी वाले आज बल्ले बल्ले करने वाले हैं। स्वागत है आपका उडुपी क्रिकेटर्स, फिर से एक बार। ये माहौल बनाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा माहौल अब बन रहा है और मजा आने वाला है आज के दिन। ये देखिए, ये है उडुपी क्रिकेटर्स, और आज ये सब कुछ होने वाला है। ढोल नगाड़े, मजा आने वाला है आज, और डांस भी उतना ही ज्यादा है। यस, या हुई, बल्ले बल्ले, ए, 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 हुई। ये मोमेंट जरूर आपके मोबाइल में, आपके ये आज उडुपी वाले भांगड़ा कर रहे हैं सर, उडुपी वाले भांगड़ा कर रहे हैं आज, मजा आने वाला है। स्वागत है। हेलो चेक। Yes, good evening, good evening, good evening, everybody. It's a match you're waiting for, and welcome everybody to Absolute Sports Ground for the first quarter final. It's two big teams. BD Gang, the gangster, Parvis Paju, alongside with him, energetic and completely pumped up dugout of Udupi cricketers, Salman Shiva. All the best, guys. There's a lot of noise around the ground when we move to the quarter final, and we'll have one more day tomorrow for the grand finale.
Good evening to Mr. Chirag, our Hindi commentator. Good evening, everyone. Good evening, Mr. Jaisal. And to umpires, Mr. Manzoor and Mr. Niaz. Thank you, guys. Olympic cricketers dug out, bringing a lot of energy into this ground and to this tournament. Excellent. And move to the first quarter final. It's going to be a 7:45 start. Batting first, BD Gang. And to start the first innings. Very, very soon. And this is a big game. And to start the proceeding, Chirag with the Hindi commentary. हल मुकाबले की ओर बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद शैलदर भाई। पहला मुकाबला अब यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। पहला मुकाबला जहाँ पे आज की ये रात का पहला मुकाबला जहाँ पे बीटी गैंग और उड़पी क्रिकेटर्स, जिस प्रकार से ये माहौल बना है, मैं जैसल भाई थोड़ा खुश हूँ क्योंकि जिस प्रकार से माहौल उड़पी ने बनाया ये देख के मज़ा आता है, क्योंकि ये वो फील आता है स्टेडियम वाला, और ये स्टेडियम वाला फील आज कराने के लिए, और जिस प्रकार से ये ढोल नगाड़े बजने वाले हैं, ये भोपू तो बजा ही रहे थे लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ आए। आज मुझे लगता है थोड़ा सा मैन पावर कम है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ये मैन पावर और आगे बढ़ेगा और एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। और ये देखिए, ये दोनों टीमों की बात करें, एक मैंगलोर से एक उड़पी से, तो भाई भाई के बीच में ये टक्कर है। तो दोनों भाई भाई, ये भी गाना होना चाहिए। यस, ये दो भाई आमने सामने है और देखिए मजा आने वाला है। दो भाइयों के बीच वाली टक्कर, बड़ा भाई जीते छोटा भाई जीते मालूम नहीं, लेकिन जो भी जीते यहाँ से जो खुशियां है वो मैंगलोर में ही जाने वाली है, वही जाने वाली है। तो गेंदबाज तैयार, पहला ओवर लेके सुहेल, नहीं सुहेल बल्लेबाज है और दीक्षित, ये ऊंचे कद के दीक्षित, और पहला ओवर निजार, पहला ओवर लेके। यस, शुरुआत होती हुई पहली गेंद राइट ऑफ द विकेट। इस बार गेंद को मिड ऑफ पे खेला, पहला रन यहां से मिलता हुआ टीम बीटी गैंग को। बीटी गैंग वर्सेस दूसरी जगह हम देख रहे टीम उड़पी क्रिकेटर्स। ये माहौल बन रहा है आज। माहौल क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों टीम आमने सामने बड़ी है और एक ही जगह से, और इसी कारण मैंगलोर और उड़पी ये दो टीम आमने सामने, और इन दोनों ने माहौल बना दिया है। ओवर नंबर ये पहला, गेंदबाज फिर से निजार टू दीक्षित। दीक्षित इस बार गेंद को आने दिया, थर्ड मैन पे गेंद को जाने दिया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड में बदलाव होंगे। स्कोर मूव्स टू 2, 2 रन बिना कोई नुकसान। प्रीमियर टेक्नोमीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 और डे नंबर 12। डे नंबर 12 में आप देख रहे हैं पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जहां पे उड़पी क्रिकेटर्स और बीटी गैंग आमने सामने है। गेंदबाज फिर से तैयार, निजार इस बार रिवर्स खेला, गेंद अच्छे से कनेक्ट हुए, ये रुकने वाली नहीं, गेंद जाएगी दन 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 करके 4 रनों के लिए चौका। यहां से ये पहला चौका मिला बीटी गैंग के लिए। लेकिन अब भाई भाई है तो दोनों तरफ ढोल बजने चाहिए, ये अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों टीम एक ही स्टेट से, और मुझे लगता है कि ढोल बजाने के लिए कुछ बजना चाहिए। लेकिन ये 6 रन, अब तक का स्कोर 6। अच्छी शुरुआत, पहले 2 गेंदों पे 2 सिंगल। ये देखिए, एक तेरी तो एक मेरी। सुहेल बैक टू द पवेलियन, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक चौका लगाए थे, लेकिन ये देखिए, ये माहौल देखिए, ये सारे माहौल आपको देखने को मिलने वाले आज। यस, मजा आने वाला है, क्योंकि ये देखिए जिस प्रकार से ये गेंद थी ऑप्शन के बाहर वाली, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और पहला झटका नासिर ने ये पहला झटका दिया है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे सुहेल वहां पे है, बैट के लिए यहाँ पे जरूर आया है दीक्षित। दीक्षित को बल्ला चाहिए
उसी कारण हम देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए तीनों दोनों साइड से रिप्ले देखिए, तीनों तीनों रिप्ले देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बात करें अगर इस मुकाबले की तो ये मुकाबला काफी अच्छा तगड़ा होने वाला है और काफी बड़ा झटका। सुहेल बैक टू द पवेलियन, न्यू मैन इन। अब विकेट, पहला विकेट। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में जब पहला विकेट आता है तो मजा आता है। ये आज एक अलग टाइप लाइन इनके लिए बना दो, उड़पी क्रिकेटर्स विद भांगड़ा। और एक भाई ने, यस थैंक यू ढोल, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे भी ध्यान देना, क्योंकि दोनों अपने ही घर की टीमें हैं, तो दोनों टीमों को सपोर्ट आपका होना चाहिए। अब तक का स्कोर 6-1, न्यू मैन इन सरफराज। सरफराज क्या आज वो बल्लेबाजी करेंगे? पहला विकेट 6 पे, गेंद निसार। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पैर पे लगी है। अंपायर के संकेत क्या आने हैं ये देखना होगा, और अंपायर ने कहा है इट्स लेग बाय। स्कोर मूव्स ऑन 7, 7 रन। सरफराज, दीक्षित, पहले ओवर की आखिरी गेंद 7 पे 1। इस बार दीक्षित का बल्ला, माशाअल्लाह, व्हाट अ बॉलिंग, सिक्सर। देखिए इस तरफ आवाज आ रही है, उस तरफ आवाज आ रही है, और मैं यही कह रहा हूं कि मुझे वो कोई मिल गया का गाना याद आ रहा है, कभी इधर चला कभी उधर चला। ये मजा आने वाला है। कभी विकेट आएगा तो यहाँ से ढोल बजने वाला है, लेकिन जब छक्के चौके आएंगे तो तालियां कम नहीं आने वाली, तालियां भी उतनी ही बड़ी आने वाली है। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे हैं 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दीक्षित ने कहा भाई हम भी तैयार है आज रंग भरने के लिए, इस क्वार्टर फाइनल के बड़े मुकाबले के लिए हम भी तैयार है। मजा आने वाला है, क्योंकि ये बेस्ट 8 टीम्स है, और बेस्ट 8 टीम्स जब आती है आमने सामने तो वो ऐसा ही हम कहे कि मुकाबले देखने को मिलेंगे हमारे सारे दर्शकों को। 13 लॉस ऑफ 1। धीरे धीरे अब उड़पी क्रिकेटर्स का जो ख्यामा है वो बढ़ने वाला है, और वहां पे नजरें होंगी हमारी सभी की। अगर हम उड़पी की बात करें तो उड़पी का जो लोकल डांस है वो पिली डांस है, जहाँ पे टाइगर्स वगैरह होते हैं। लेकिन भाई आज ये भांगड़ा कर रहे हैं, कुछ क्यों क्यों वो समझ नहीं आ रहा है। वो भांगड़ा क्या वो पंजाब वाला पावर लेना चाह रहे हैं आज खेल में। और दूसरी जगह बीटी गैंग, क्योंकि मुझे अभी भी याद में उड़पी में जब टूर्नामेंट किया था, उड़पी प्रीमियर लीग जब रोड शो था, तो रोड शो में वो पीली डांस ही हमने इंजॉय किया था। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, 13 लॉस ऑफ 1। सादिक कापू इनको नहीं भूल पाएंगे, जिनकी वजह से वो हमें मौका मिला था वहां पे। ओवर नंबर दूसरा, सलमान ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को थर्ड मैन पे जाने दिया, 1 रन। लेकिन वहां पे थोड़ा सा फंबल हुआ है। स्कोर मूव्स ऑन 14। क्या शुरुआत हुई है, बस आने वाला है। लेकिन हम जब बात करेंगे उड़पी क्रिकेटर्स की, इनके पास भी वो दमखम है, ये भी जानते हैं अच्छी बल्लेबाजी, इसी कारण इस टूर्नामेंट में अब तक सुपर 8 में पहुंचे हैं। तो बीटी गैंग, पज्जू एंड गैंग, और दूसरी जगह हम बात करें सलमान एंड गैंग, जिस प्रकार से ये दोनों आमने सामने, मजा आने वाला है। दीक्षित, सल्लू सल्लू ये हो रहा है, और सल्लू के गेंद, इस बार इस गेंद को सम्मान दिया। ये अच्छी क्रिकेटर की कहा हम
बातचीत जब करते हैं कि अच्छी गेंदों पे वो कोई बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं जाते, वहां पे वो थोड़ा सा संयम रखते हैं और रिस्पेक्ट देना। हम हमेशा कहते हैं, मैं कमेंट्री वक्त कहते हुए हमेशा कहता हूँ कि अच्छी गेंदों का सम्मान करो और बुरी का अपमान। ये अच्छी वाली थी। स्कोर मूव्स ऑन 15, 15 पे 1, स्ट्राइक पे अब सरफराज। सरफराज इस बार लेटे हैं, लेकिन ये लेटते ही 4 रन, चौका। हम गिरेंगे, हम फिर से उठेंगे और हम ऐसे ही चौके लगाएंगे। ये अलग रिवर्स स्ट्रोक है। ये देखिए जमीन पे गिरे हैं लेकिन गेंद को निशाने पे, देखिए कैमरा को ही बराबर टारगेट किया है। 4 रन, चौका। स्कोर मूव्स ऑन 19, 19। बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आई। पहला रन पे तेजी के साथ भागा, जब तक मिडॉन से गेंद को उठाए 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 20, 20। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय बीटी गैंग। गेंदबाजी के लिए सल्लू, सामने दीक्षित। ओहो, व्हाट अ बॉलिंग, क्या गेंद थी। इस गेंद को जिस प्रकार से सॉलिड डिफेंस देखने को मिला, 1 रन तो मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 21, 21। शुरुआत देखिए, पहला झटका जल्दी लगा था, 6 पे पहला झटका लगा। आउट होने वाले बल्लेबाज सुहेल थे, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों में 15 की साझेदारी। अब तक का स्कोर 21, 21। आखिरी गेंद, इस गेंद को खेला, फिर से मिड ऑन पे जाके गेंद को फील्ड करना होगा। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को काफी चेस करना पड़ रहा है। ओवर समाप्त होते हैं यहाँ पे। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 22, 22। दो ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे अब तक ओवर नंबर 3। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे हैं 22 रन, और ये तीसरा ओवर किस प्रकार से आएगा ये देखना होगा। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, बड़े स्ट्रोक की तलाश, डॉट बॉल। फरहान है गेंदबाजी के लिए, सामने सरफराज। डॉट गेंदों पे भी आज ढोल नगाड़े बजने वाले हैं, मजा आने वाला है। ये कॉन्टेस्ट काफी अच्छा हो रहा है। हम उड़पी क्रिकेटर्स की बात करें, पूरी तरह से आज जोर शोर लगा रहे होना चाहिए, क्योंकि अपनी घर की टीम है तो टीम को सपोर्ट ये काफी महत्वपूर्ण होता है। फरहान की गेंद इस बार बैक, बॉलर्स बैक ड्राइव, और ये बहुत अच्छी फील्डिंग। व्हाट अ फील्डिंग, रिले फील्डिंग। 2 रन बचाए जरूर अपने टीम के लिए। सीधे बल्ले से मजा आ गया देख के। स्कोर मूव्स ऑन 24, 24। सीसीआरसी वॉरियर्स भी अब हल्के हल्के कदमों से यहाँ पे आती हुई, उनका भी स्वागत है। चैंपियंस, आपका स्वागत है। पिछले साल की चैंपियंस है ये। इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क, छक्का, 6 रन। बीटी गैंग ऑन फायर। स्कोर की बात की जाए, स्कोर जा पहुंचा अब 30 रन। 6 पे पहला विकेट था, लेकिन उसके बाद अब ये मुकाबला बदल रहा है। छोटी गेंद थी, इस बार गेंद को खेल दिया है। डीप पॉइंट से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करे, दूसरे का कॉल है। क्या कॉल यहाँ पे खराब है, क्या यहाँ पे विकेट हो सकता है? थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे।
उच्च न्यायपालिका के पास। OUT, बैट्समैन आउट। काफी करीबी मामला था और वो करीबी मामला देखा गया और जिस प्रकार से ये विकेट है काफी नजदीकी मामला था और नजदीकी मामले में यहाँ पे बल्लेबाज को वापस लौटना होगा। जिस प्रकार से ये गेंद लगी थी ये काफी बड़ा विकेट है। देखिए जिस प्रकार से थ्रो आया, सर थर्ड अंपायर ही दिया है, थर्ड अंपायर ही दिया है अंपायर ने।
विकेट नंबर यहां पे आता हुआ दूसरा। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर। इस बार ये वाइड वाइड। थर्टी टू लॉस ऑफ 2, 32 पे 2। इस बार दीक्षित, इस बार गेंद को खेला जब तक मिड ऑफ से। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर अब जा पहुंचा। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, वॉट अप स्ट्रोक। जिस प्रकार से गेंद को आने दिया उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड पहुंचा 34 रन। 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं और टाइम क्या यहाँ पे 3 ओवर 34 रन, 2 विकेट। तीन ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, 34 रन। और अब क्या आने वाली गेंदों की भी तारीफ करेंगे और बातें करेंगे क्या होने वाला है। यस, मुकाबला शुरू होने जा रहा है फिर से। 3 ओवर 34 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन अब फिर से क्या। सलमान गेंदबाजी के लिए फिर से वापसी करते हुए। सलमान, उनके सामने दीक्षित नहीं, अब परवेज पज्जू है। पज्जू ऑन स्ट्राइक। इस बार ये गेंद पैर पे जरूर लगी है, थोड़ा सा फंबल, लेकिन डॉट बॉल। चौतीस पे 2 मुकाबले में थोड़ी सी अलग एनर्जी आ चुकी है, मजा आ रहा है। 34 पे 2। अल्ताफ भाई, आपका स्वागत है, हमारे को कमेंटेटर। 34 पे 2। अब आज ये बहुत हम कहेंगे सारे मुकाबले आज के हाई वोल्टेज है, मजा आने वाला है। 34 पे 2। ओवर नंबर 4। गेंदबाजी के लिए सलमान, सामने परवेज पज्जू, काफी बड़ा नाम कतर क्रिकेट का। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को आने दिया, अच्छे से खेला, गेंद को 1 रन पूरा करेंगे। 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 35 रन, 35। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरथ्रो की कोशिश, लेकिन आज मैंगलोर और उडुपी ये दोनों आमने सामने हैं आज। दक्षिण कन्नड़, मजा आने वाला है आज का मुकाबला। तो ये कांटे की टक्कर है दोनों टीमों के बीच, जैसे मैंने कहा। अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड आउट खेला है, फील्डर काफी दूर है, वहां तक गेंद को फील्ड करे, 2 रन पूरा करेंगे। और स्कोर की बात करें, खराब फील्डिंग, बॉलर खराब गैदरिंग, 3 रन पूरे।
अच्छा स्ट्रोक था दीक्षित का, लेकिन क्या सलमान ने इस गेंद को पकड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, खराब फील्डिंग है सलमान की। 38-38। ये मुकाबला काफी कांटे की टक्कर है दोनों टीमों के बीच। ये जिस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ रहा, मजा आ रहा है। डॉट बॉल, सबसे बुरा मुकाबला इसके बाद आ रहा है, सबसे बड़ा मुकाबला, जहां पे सीसीआरसी वॉरियर्स वर्सेस M3 टाइगर्स, दोनों आमने सामने। आज के दिन का ये सबसे बड़ा मुकाबला क्यों बता रहा हूं, दोनों टीमें एक भी मैच हारी नहीं है लीग में। इस बार ये गेंद 1 रन पूरा किया। थर्टी नाइन 39। दीक्षित के बारे में थोड़ा सा कहेंगे, आज ब्लैक पैंट पहनी है और सामने वाली टीम को थोड़ा सा वो आज खतरा भी हो रहा है। 39-39, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दीक्षित। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे की मांग हो सकती थी लेकिन पज्जू ने पहले कहा नहीं, नो। स्कोर मूव्स ऑन 40-40, 40 रन अब तक। चार और 40। चार और 40, ये दर्शक देखिए आपके सामने हैं, ये मजा ले रहे डकआउट्स में। जो हमारे स्टैंड्स में यहाँ पे दर्शक बैठे हैं। आज की ये संख्या कम है लेकिन ये बढ़ने वाली है, तो आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाए। हमारे साथ जो ऑनलाइन दर्शक जुड़े उनका भी स्वागत है। 40-40 पे 2, और ये उड़पी रेस्टोरेंट आप देख रहे हो, उसी के साथ हमारे सत्तार भाई का वो रेस्टोरेंट, वो भी आपके सामने है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों का खाने का ख्याल रखा जा रहा है। और ये हमारे टेक्नो मीडिया का ये जो स्टैंड है वो भी सभी का मन लुभा रहा है। टेक्नो मीडिया का स्टैंड हर साल कुछ अलग होता है, इस साल भी वही काम करते हुए टेक्नो मीडिया मैदान की ओर। स्कोर 4 और 40, गेंदबाजी के लिए आदिल। पहली गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, फील्डर आएंगे नहीं, थोड़ा सा आगे गिरी है गेंद। 2 रन पूरे करेंगे नो डाउट। स्कोर की बात करें, स्कोर मूव्स ऑन 42 रन। पहली गेंद थी, उस गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाह रहे थे, 2 रन यहां पे मिलेंगे। स्कोर की बात की जाए, स्कोर मूव्स ऑन 42 रन। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। कैच छूटा। ये लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छे से खेला, फील्डर है लेकिन बनेगा दर्शक, खराब फील्डिंग। ये दोनों देखते रहे भाई, ये तेरी है या मेरी है, और तब तक गाड़ी छूट गई। 4 रन, चौका। ये देखिए अन्ना, आपको रहना पड़ेगा चौकन्ना। ये 4 रन। स्कोर मूव्स ऑन
47-47, पांचवा ओवर। बीटी गैंग, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। अब पज्जू भी अपना रंग दिखाते हुए, पज्जू की अगर हम बात करें पिछले वर्षों से ही यहाँ पे कतर क्रिकेट में अपना काम बखूबी निभा रहे। 47 पे 2। गेंदबाज फिर से तैयार, 33 नंबर आदिल। इस बार रिवर्स और ये भी मिलेंगे 4 रन। 51 ऑन बोर्ड, 51, 50 का आंकड़ा पूरा। वेल प्लेड बीटी गैंग। आज पज्जू ने थोड़ा सा अपने आप को कहा है कि भाई ये बड़ा मुकाबला है, तो बड़े मुकाबले में मैं खुद चार्ज लूंगा। और 2 चौके अब तक, 7 में 11, 157 का स्ट्राइक रेट। दीक्षित की बात की जाए 9 में 17, 188 का स्ट्राइक रेट। और अब तक का स्कोर 47। ये इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। 51 माफ कीजिए, सॉरी 51, 51। 4 रन प्लस करने थे, वो रह गए थे, वो हो गए। थोड़ा सा अपडेट लेट हुआ, सॉरी। इस बार गेंद हवा में, 1 बाउंस फॉर चौका। 55, 55 ऑन बोर्ड। पचपन। और अब आखिरी गेंद आनी अभी भी इस ओवर की बाकी। आदिल काफी महंगे साबित हुए। इस ओवर में अब तक 15 रन खर्च किए आदिल ने। लास्ट बॉल, अब तक का स्कोर 55, 55। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, मिड ऑफ पे खिलाड़ी एक खतरा हो सकता है, लेकिन 1 रन। स्कोर मूव्स ऑन 56। 5 ओवर समाप्त, इस ओवर में आए 16 रन। अभी भी आखिरी 6 गेंदें बाकी, लास्ट 6 बॉल्स। लेकिन उससे पहले M3 टाइगर्स और CCRC वॉरियर्स, आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है प्लीज, जल्द से जल्द। आखिरी 6 गेंदें, लास्ट 6 बॉल्स। टाइम की ओर भी आपकी नजर आनी चाहिए। 56 रन अब तक, 56। और अभी आखिरी 6 गेंदों में कितने? शिजुमान सर, आपका स्वागत है फिर से। सामने बिलाल भाई, रमजी भाई, जयसल भाई, हमारे राहुल जो आज अलग भूमिका में है, हमारे फूड चेयरमैन रियाज भाई। आखिरी 6 गेंद, गेंदबाजी के लिए प्रणव। पहली गेंद हवा में है, फील्डर, और यहां से क्या छूटा, और 4 रन चौका। खराब फील्डिंग, सिंपल कैच था वो। स्कोर मूव्स ऑन 60, 60 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है आज बेटी गैंग, जिस प्रकार से चार्ज किया है इस मुकाबले में। व्हाट अ बैटिंग। अल्ताफ बोले थे कि 65 होगा, अब उससे ज्यादा होगा अल्ताफ। 60 ऑन बोर्ड। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग होगी या नहीं। दीक्षित लेकिन नहीं है, 2 की मांग है और 2 पूरे होंगे। स्कोर मूव्स ऑन 62, 62। आखिरी 4 गेंदे, कितने रन होंगे? क्या उडुपी क्रिकेटर्स को थोड़ा सा शांत किया है, जैसे वो मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल याद आ रहा है।
पैट कमिंस का वो कमिटमेंट, क्या वो परवेश कर रहे हैं? पच्चू कर रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, फील्डर क्या ये कैच नहीं, एक रन दूसरा भी हो सकता था, लेकिन पच्चू को यहाँ पे लौटना होगा ऐसा लग रहा है। ये सुसाइड 66। ये भाई भाई वाला झगड़ा अब इस प्रकार से ये चल रहा है। मैंगलोर और उडुपी की बात करें, 60 किलोमीटर का वो डिफरेंस है, सिर्फ उतना ही, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, या 70 रहेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन देखिए वो कांटे की टक्कर, और आज पीली डांस नहीं कर रहे, लेकिन आज भांगड़ा कर रहे। 66 और तालियां बज रही, 63 ऑन बोर्ड। आज कमेंटेटर्स भी अपना आपा खो रहे, कभी बढ़ा रहे कभी कम कर रहे। और इस बार विकेट, बड़ी विकेट, बैक टू बैक, दो सेट बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। सिक्सटी थ्री लॉस ऑफ 4, और दो गेंदें आनी बाकी है। दीक्षित बैक टू द पवेलियन, वेल प्लेड दीक्षित। और 3 मिनट बाकी है, दो गेंदें आनी बाकी है। अच्छा मुकाबला। गेंदबाज फिर से तैयार होंगे, अगला गेंद लेके तैयार गेंदबाज प्रणव। अच्छी गेंदबाजी अब तक की प्रणव ने। आमिर ऑन स्ट्राइक, आखिरी दो गेंदे, कितने रन आएंगे? इस बार गेंद को आने दिया, पैरों पे गेंद थी, पहला रन तेजी के साथ भागे, थोड़ा सा वहां पे फील्डिंग देखिए, बहुत ही अच्छी। 64 ऑन बोर्ड, आखिरी गेंद। अल्ताफ भाई ने 60 पाए कहा था, वो वहां पे क्या गाड़ी रुकने वाली है। CCRC Warriors and MT Tigers, please come for the toss immediately. अगले मुकाबले की ओर, आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला सर, वो दो टीमें जो इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला हारी नहीं है। एक रन पूरा करेंगे, दूसरे की मांग होगी, दूसरा के लिए दौड़े हैं, और 2 रन भी यहां से पूरे होंगे या नहीं, ये अब देखना होगा। यहां से ये जाएंगे थर्ड अंपायर के पास, यस नो डाउट। 64 बने, अब यहां से कितने ए प्लस होंगे वो देखना है, और उसके बाद आपको हम फाइनल स्कोर की तरफ जाएंगे। नॉट आउट, 66 ऑन बोर्ड एंड 67 इज अ टारगेट। 67 रनों का लक्ष्य का पीछा। और अब कमेंट्री बॉक्स में छोटा सा हल्का सा बदल करेंगे। हमारे साथी कमेंटेटर शिलजार भाई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर आपका स्वागत है आज के क्वार्टर फाइनल के इस सुपर 8 के पहले मुकाबले में। Yes, welcome back. Thank you, Chirag. 66 for 4. And that's what they got in the first quarter final of Asian Cricket League Season 3. Started on time at 7:45. That's two big captains, two big teams. Really pumped up both dugouts. And when they come out to chase the 67 runs to win, this is above the par score. They have to really work hard. BD Gang. Captain Pavis Paju. A lot of drama already in this first innings and move to this knockout.
The next one is coming. Tigers taking on CCRC. The biggest contest in this quarterfinal. Can't wait for that. And have a look at the noise. A lot of noise, cheers, dole. Really enjoying out there in the middle. The dugout will be sending their two best openers to chase this down. This is going to be very interesting. ODP cricket has got depth in the batting. Salman Shah, Pranav Ravi, Nizam, Shakir, Mohammad Farhan, Nizar Oracle, Sartaj Khan, Hashim, Imran Shiva, Muhammad Adil and Nazir. Plenty of actions coming right next here. This is the quarter-final number 1 for the BT gang. That's an impact player. Arun in and Fahim substituted. There we go, the impact player. Holby cricketers just few minutes away from the chase. If they win, they go to this semi-final, and tomorrow is a closing ceremony. And we call 2 captains. Tigers taking on CCRC Warriors. 2 captains, please be here for the toss, guys. And on this occasion here, the big thanks goes to the 3 sports bikes. The 3 sports bikes for the very first time a cricket tournament is going to give you amazing reward. Tournament is going to give you amazing rewards for 3 best players in this tournament. Let's wait and see who are there for the race for this bike. Right after 3 games, we'll come to know all those big players who are chasing the 3 sports bikes for tomorrow. Don't miss the action tomorrow. Don't miss the closing ceremony. We're going to give one of the best rewards as far as the cricket tournament is concerned. It's all being brought to you by Premier Techno Media, setting up a real high standard in terms of conducting cricket tournament right here in Qatar. Welcome back everyone, all the cricket lovers, for the chase. An electrifying atmosphere and completely pumped up the dugout of would-be cricketers. Guys, are we ready for the chase? And the gangster Paju needs to really marshal his troop. This is going to and to bowl this first over. Rizlat, here we go. Brilliant touch and finds the fielder. That took the circle in the covers. As we know, this is above the pass score here. 67 to defend. It's going to be a lot of hard work. They might have 6 runs ahead of the pass score, but still they are up against one of the very strong batting lineup in this tournament. That's Olympic cricketers. They got depth in the batting. That's a good shot and straight away to the field. A good fielding effort. So 2 dots. Had to off the mark. Olympic cricketers. They're chasing 67 from 6 over. This is a quarter-final number 1. When we move to the business end tomorrow, it's going to be a closing ceremony of Asian Cricket League Season 3. Out of 24 are into Super 8. The best 8 teams up in the air. Chance for the keeper and it's easily done. It's a big blow. First wicket goes. Look at the celebration. Oh, that's an absolute pandemonium there in the dugout. Silence. Completely silence the dugout with that wicket provided by Rislat. What a breakthrough. They got the kind of dream start they got in. Nizam is back in the hut and without having runs on the board, they got the big wicket. It's a big fish and Rislat strikes.
from the third ball of this innings. None for one, Olympic cricketers. And Farhan joined there in a tricky situation. Need to start from the scratch. Don't have runs at this moment. As good as an opening batter now. Two opening batters. One of them has gone. The Farhan joined. And Nizar yet to face his first ball. It's all happening here in Absolute Sports Ground, MS Dhoni Cricket Academy. A magnificent venue for this tournament. That's the first. Oh no! Straight toss. Brilliant fielding continues. The covers. The man is enjoying out there. Have a look at the smile. He's got three brilliant piece of fielding. That's not allowing the batter to off the mark. There's a kind of dream start they got. Speedy Gang straight away putting pressure to Olympic cricketers. They need to somehow start the runs on the board. It's time to break the shackles, yes. That's the first one. Away from the outside off stump, and it's the first one conceded in the form of wide. Finally, they have run on the board now. 1 for 1, good cricketers. They expected they are going to go for review. Paju, need to make the review soon. You cannot take so much time. The review has given for the wide delivery. Have a look at this one. We'll come back to you on that very soon. As it's been taken a lot of time, Parvez Fajr, captain, please not moving on. That's the first run from the bat. They don't need to take any risk now. They got a wide and a single. Olympic cricketers, the shaky start. Not a convincing one with chasing down a huge target above the pass score. There's 2 runs on the board and lost a wicket. Rizlat, what an over it's turning out to be. Just 1 to go. Just pushing to the same man, has got plenty of work to be done in the covers region. He's kept everything possible. Stopped the deliveries. Now he's gone 2 for 1 after the completion of the power play. Olympic cricketers has got a shaky start. And now it's a huge task ahead of them. Huge mountain to climb. Another 65 from 30 deliveries. You're talking about 13 runs per over. Yeah, it's a record run rate. Or for the spectators, if you want to win some interesting gift hampers from us, you just have to go to the photo frame. There is a barcode reader. You can scan and register yourself. हमारा वैगन व्हील जो गिफ्ट हैम्पर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उधर जाने के फोटो फ्रेम के पास एक बार कोड रखा हुआ है सो आप रजिस्टर कर सकते हैं स्कैन एंड रजिस्टर योरसेल्फ टू विन द गिफ्ट हैम्पर्स right there next to the photo frame. On the left side of the podium you can see a photo frame. There you have the scanner. You can register after scanning that barcode reader. Thank you guys for giving us brilliant support from the spectators who comes in very good number in spite of having the working day. Don't want to miss this action. This is a big tournament. These are the moments. Last 2 days started off with the quarter final number 1 between 2 very good teams. Out of 24 we have the best 8 teams into the Super 8.
Yes, moving on. Time for them to change. Just need to forget what happened in the first over. Now start. Come on, Olympic cricketers, dugouts now. That is the new beginning and the new over. Into the bowling. Shinas. Chassis number 1. Here we go. Right arm over the wicket. Trying to go for reverse sweep and given straight away wide. Three for one. Farhan and Nizar are on the crease. Two big teams. So one have to go out from this tournament. It's going to be the best teams who are going to stay back. These are tense movement. These are some big guns on both sides of these two teams. Have been really, really good throughout this tournament. They come out to the quarter-final. The best team will stay back. Is it going to be the cricketers? Is it going to be BD Gang? We'll come back to you on this right after this innings. Is already predetermined to go for that reverse. With an umpire calls it's a no ball coming up, a free hit. Yeah, there's a lot of noise here in the dugout as well. Dole need to really give some encouragement, support for their batters. It's got to be a free hit. Struggling 4 for 1. Come on, get one out of the park. That's Farhan. It's not enough connections. Kept it very low. Just a single. Oh, they ran for the second. Good running. Very good running. We'll have a discussion now. Has it touched on his bat? Plenty of drama already in this innings, and I've seen the last innings. It's a tense game. It's a crucial game. It's a knockout. If they win, they come out tomorrow for the semi-finals. You can expect them to take their own time, and 22 minutes and 50 seconds left. Have a look at the timer as well, Captain. 6 for 1. It's not a convincing shot again. It's going to run on. Chance for the second. They're converting that ones into twos. Brilliant pace of running between the wickets. They need to get. All these runs are very crucial. They're not getting the boundaries, but they're getting ones and twos here. It's 8 for 1. Farhan 5 from 5 and Nizar just faced one. Right on the block hole. Has pushed towards the mid-on region, and there's a fielder all the way from the long on. So after the power play, the field has been spread across the boundary. Have a look at the fielding position now. The Paju need to make sure that his best fielders are in the right position, especially long on, long off, deep mid-wicket. The cow end of this ground. There we go, Dikshit. Deep mid-wicket and fine leg inside the circle. The third man, deep, extra cover, deep, backward point. Swing and a miss. These are the dot balls. I'll have to really pay for that.
They cannot afford any more dot ball. The required run rate is going to be cruising close to 14 to 15 runs. So have a look at the required run rate now. Trying to go for reverse, and it's not a good shot selection. Again, they got to give credit to the bowlers. They are stick to the basics and not allowing the batter to freeze their arms. This is what exactly happened. The first 1 over and 5 deliveries. Just managed to get only 10 runs. ODP cricketers struggling, searching for the first boundary. Shinaz, so far so good. 7 conceded. Back of the length, is very good. Very good piece of bowling. Continues. Retain the strike for the next over after 2 ODP cricketers move to 11 for 1. And the record run rate will be close to 15 runs now. (56) from 24. So you're talking about 14 runs per over. That's a record run rate. Captain is aware of it. The players are aware of it. The dugout is aware of it. What they need is at least a couple of sixes or 3 boundaries. They do not have much time to settle down. They need to change the gear. The time for them to put the feet on the accelerator. This is a big game. ODP cricketers quite capable of chasing any target, but this is a pressure game. Will they be able to perform? Can they raise to the special occasion? This is quarter-final number 1. You can expect pressure. As expected, Rizlat coming to his second over. This time, good connection and straight to the man. There is a fielder. He didn't have to move at all. So have a look at the fielding position. Went for the reverse. Put the mid wicket, a magnificent 6. This time, not a bit of fumble allowed the batter to go for the second run. Not a great throw. 2 very crucial runs as well. The challenge for the dugout and all those Dole guys, when they start moving the bowler, you got to stop the Dole. You got to stop the music. Trying to attempt the reverse sweep, this time beaten, and still trying to sneak a single. Leg by call by umpire. We have seen some brilliant reverse sweep in the last innings. The temperament will be tested here of these 2 batters right in the middle. Chance, taken brilliantly. That's the captain leading from the front. It was a very, very good catch. Just made sure that he's kept the eye on the ball, and just brilliant, absolutely brilliant from Paju. Second blow for ODP cricketers, 21 for 2 now. And big man walks in. Now these are the dot balls. These are the wickets they are desperately looking for. They got runs on the board. And BT Gang's got the solid start in terms of getting wickets whenever they need it. Been quite successful breaking the partnership. And ODP cricket are still looking for one big partnership which can literally take them through. It's all up to the temperament, how they're going to deal with the pressure. This is not over. We're just into the 3rd over of this second innings. They can really plan after the first
half of this innings. But the question is whether they'll be able to get runs when they go to the strategic timeout. Just 21 for 2 and 1 legal delivery left. And let's quickly get into the next half of this. 19 deliveries and 46 runs to win. This looks like bit tough, but you never know. One big over can completely shift the momentum into the batting team. What they need is just a couple of sixes, just put pressure back to the fielding. Need 2 sixes desperately. Got one from Nizar. And Shakir joined there in the middle, the new batter. If you remember the last innings, Litton has played an absolutely brilliant innings. Just pulled off things in style. The last game of last night. From nowhere, he got his team into the quarter-final. It's pushing towards the long-on region and... Oh, yes, no, and finally they're running for the second. Yes, brilliant, good running. And there will be special gift hampers for the man of the match from every match for the quarterfinals, starting from this. Talking about the last innings Litton had played, he's lost 3 wickets. They were struggling and he has become the real hero. As I just announced, that's a special gift hamper for man of the match right from the quarter-final. Number one's being brought to you by our sponsor EcoFresh. Thanks, guys. Somebody need to play a special innings like Litton did last night. 23 for 2 after the completion of exactly 3 overs. 24, I beg your pardon, 18 deliveries left. And they need 44 more runs. And the run rate still kept on moving. It's close to 15 now. As Abdul Bar swing and a miss. Now this is a very, very good over as far as 2 teams are concerned. Bar is a very clever operator. He is not going to give any easy picky for the batter. It's a slow deliveries will definitely trouble the batter. Bar has been very, very good form. And it comes out to ball. The Sammy connects. Has he got enough? Has he got enough? Don't think so. Straight to the man. Another wicket goes. Oh, that's a big blow. Another big blow for Udupi cricketers. They're losing wickets in regular intervals. Trying to clear the man. Reverse sweep. The backward point is kept just few inches away from the boundary line. It's all happening here. The tension increases the dugout. Paju and his gang is having a brilliant day. The quarter-final number 1. They got runs on the board. They had the fielders right in the position. They didn't have to move at all. If you look at the last catches, Altaf, 2 catches was taken. He didn't have to move at all. 3 dots. 3 dots in the first over. It's all started from there. The pressure started mounting from the first over. Bar comes and he has taken a blinder. Wicket number 1 for Abdul Bar. Just from the first 2. BD gang, dugout, come on. He goes around the wicket now. The new batter, left hand joined there as Wazil. Can he create some difference here? Left hand, the bat is quite capable of producing all these big boundaries. He needs to play really well. Big shot, but just not enough. Another as he dropped. An absolute dolly has been put down. Should have been taken. Bar's got a smile on his face. All of a sudden, Dishit comes to the long on.
They don't mind. They don't want to concede too many boundaries. They don't really mind ones and twos here. Right on the block, all bar again. Continue to impress. It's a brilliant bowling attack. This has been the story so far. They have been quite brilliant in terms of giving the dot and kept it very, very low. Yorker length. As 3.4 and 27. Can we expect some momentum change here? Can Wazil get some lasty blows? Not again, not again, trying to play across. Just a single. They got to give credit to Bar as dealing very smartly. He's going to change his angle now. It's going to bowl around over the wicket, make a pardon now. 28 for 3 after 3.5. Sakir. Drifting towards his pad, just managed to get a single. It's not getting the elevation, not getting the kind of shot they wanted to play towards the square. Like this has been the real worry for the dugout of the Udupi cricketers. They're struggling. 4 overs completed, just 29 runs on the board. And what they need is 38 from 12. So talking about almost close to 20 runs they need in the penultimate over. It's always going to be very, very interesting. They can still come back to this game. I'll tell you what, Udupi cricketers dugout, you can still come back to this game. What you need is one big over. And this is a brilliant bowling performance, a penultimate over. Can they score at least 20 runs in this? Parvez Paju is going to make sure that his field is on the right position. He had a very good day in spite of one drop catch. Other than they have been spot on. All the ground fielding has been superb. 3 dots in the first over itself. They started creating pressure. Here the game is on. Just look like it's going to get 2 runs. Easily done. 2 from the very first ball of this 5th over. So what they need to do is try to capitalize. They got 2 from the very first. Now go for the big shot. Just need to kill. Absolutely nothing to lose. They have to go for a big shot. Take some risk. Got 7 wickets in a depth in the batting. Big shot. Has he got enough? Got the height, but not the distance. Straight to the man. Another catch has been taken. As Parvez Paju once again into the action. They are just not able to clear the boundary. Leading edge and in there for a long time. Celebration continues for Paju and his boys. And Udupi cricketers 31 for 4. Shafraz comes and takes another important. This is a penultimate over. Always very, very crucial. In the shorter format of the game now, 1 big over. They wanted very badly in this, but they kept on losing wickets. They don't want to look at the scoreboard. There's movement. $31 for 4. You win. You come out tomorrow for the semi-final. So as we mentioned earlier, man of the matches are going to receive special gift hampers brought to you by Eco Fresh from every match from the quarterfinals. Swing and a miss. And welcome, Sergi. Ek aur baar. The big guns are walking in from CCRC Warriors. They are flying really high
aren't they? And on the other side, Tigers, two unbeaten teams in this tournament, face to face. CCRC Warriors up against Sharon's boys. Tigers, they're in real good form. Do not go anywhere. The next match, the Sabse Bada Mukabla. Catches the goal. Catches the call. Oh! Just looked like he got a one-handed. Hands given 6. Somewhere in down the line. A glimpse of hopes. We always say that when you're traveling in a dark tunnel, somewhere down the line, there is a small little hope of light. That's what they would believe from now. 37 for 4. 30 from 8 deliveries. Yes, you know to reload. You need to reload this, and as soon as the batter got for the big 6, the pressure and the review straight away. Yeah, see with the big decision. It's a fair delivery. Let's have a look at the score now. 37 from 4.5. Sharfraz conceded 8 so far. Can he finish it off with 1 dot? On the other side, if we can get 1 big 6. Big 6, and they wanted. He got it. Maximum. That's a big hit. That just flew away, miles away from this ground. Deposited in style. 43 for 4 after 5. 24 runs from 6 deliveries now. And remember, there are 2 big gift hampers. One from Calicut Rahmat Restaurant for the man of the match, and Eco Fresh special gift hampers. We'll be starting from the quarterfinal, number 1. So got a lot of gifts for the players. Man of the match now. Udupi Cricketers dugout. If I can ask you, you still have the hopes in this game. It is not over. Game is on, guys. Do not go anywhere. Well, just remember one of the fantastic innings last night. Lithin had played the pulled off from nowhere, and he's become the real hero. Got through this team into the quarterfinal. Somebody need to play a very special innings. Is it going to be Wazil? Is it going to be his non-strikers and 2 sixes for Shataj? Is he going to take a single or is going to continue playing his shots? Wazil is quite capable. Left hand, right hand combination. Long on Dixit. Very good fielders in this side. Long off. Here we go. Edge. Oh, has he taken? No. Has a bit of juggle there. It's tense movement. So what has eventually happened? It's just conceded 1 run. 23 from 5. Tense everywhere in this ground. The dugout. 5 deliveries and 23 to win. Big shot. Has he got enough? Has he got enough? I reckon he has. That's a 6. Oh, would you believe that? Has smoked out of the ground. Have a look at this. As Sartaj. Can he become the real hero for Udupi Cricketers? He smoked 3 sixes. 18 from 5. Game is on. 17 from 4. Bowler under pressure. Suhan
Can he deliver one dot? Swing and a miss. He would be really disappointed with that. Snip back in. Good variation, pace off. There was no pace at all. And swinging into the right-hand batter, exactly the reason. Three sixes. You have an offer of 50 reals. Left it over. These are the tense moments. You can expect the bowler to go outside the off stump and maybe they make a mistake. As the time to welcome our international scorer of this tournament of Qatar, the one and only Mr. Rauf. Good evening to you, sir. Left it over. Good presence of mind. 2 runs. Rahul also tends a guy who is putting the score. Every ball are crucial now. 52, team 50 for ODP cricketers. 5.3, 15 runs to win 3. 15 from 3 deliveries. And just 1 minute and 40 seconds left. This is going to go down to the wire for sure. You can expect this man to go for a big shot. They do not have enough time. Swing and not a convincing one. He's got to come back. Is he going to come back? Shot! Surely he's got to come back. And easily done. And square like umpire says he got to go back. It's quite unfortunate. Very, very unfortunate. Maybe the taken off the first run they took little slow. That's the reason. A fraction of a second. Lost that wicket. A little late to react, especially when they ran for the second run. You can expect those. These are very tense moments. Talking about the shorter format, big quarter final, a chance for them to the semi-final when they come out tomorrow. You can expect them to make mistakes. That's what exactly happened here. The man who walks in a very, very important and tricky situation here. From ODP cricketers. And have a look at this time as well. The captain, Parvez Faju. It's all getting over. Time allotted is already finished here. 30 minutes. 2 balls and 14 runs to win. Sohan. Big shot, big shot. That's a 6. That's a big 6. Yes, it is. Isn't it too late? Isn't it too late? That's one question is being raised. 1 ball. Still need 8 runs. What Suhan need to do is just stick to the basics. Ball 1 legal television. He can seal the match for his team. ODP cricketers. What is there now? 1 ball straight wicket to wicket on the other side. Nazir. He got a 6 from the very first ball he faced now. Here we go. That's a very good length. Very, very good length. They kept it low outside the off stump, and that's how they defended these targets. But you got to feel sad for this team. Cricket has been fantastic throughout this tournament. But when they came out to the very, very strong opposition, they were just not able to chase a huge target above par score. But thank you so much, ODP cricketers, everyone, for bringing so much energy into this cricket tournament. You guys were an excellent support for us. Thank you so much. And congratulations, Paju and his gang. BT gang are into the semi-final
of Asian Cricket League Season 3. Checking around the players. We'll have the man of the match announcement as well. Still continue. Yeah, that's the real spirit. They continue, producing that noise and doles. From the bottom of our heart, we would like to say big thanks to all the supporters and followers, friends, everyone who arrived in this ground to support the team. There we go, shaking hands each other, all the players. It's coming to an end of quarter-final. Number 1, congratulations, BT gang. Congratulations, Parvez Paju. An absolute drama. I just thought we could get into down to the wire, but you got to give credit to the bowler who kept the nerves, tried till end of the last delivery, and succeeded in terms of defending. Very, very well done, Parvez Paju and BD gang. You are into the semi-final of Asian Cricket League Season 3. We'll see you tomorrow. And your opposition team will have to wait for the other results. We'll have 3 quarterfinals more this evening. I'll come back to you on that very soon. As we mentioned earlier, we have to give our Man of the Match awards. Although Eco Fresh and another sponsor, Calicut Rahmat Restaurant, are going to give away special gift hampers for the Man of the Match. From today onwards, I would like to welcome our next commentator, Altaf. You can join with me over here. We are talking about 2 teams who are unbeaten in this tournament. Man in blue and man in green. You're talking about a Pakistan-India match. One man has got the first hat-trick of this tournament, none other than Sharin, the captain of Tigers. On the other side, brilliant execution with the ball and bat, very professional team, CCRC Warriors, filled with Pakistani players. You can expect some fireworks. Anything more than 60 is difficult to chase. And the team batting for CCRC going to bat first, and Sharin knows the situation really well. He has got some very, very good bowlers alongside with him. And the strategy, what they're planning at this moment, to restrict the opposition team less than 50 runs, and quite capable of doing it. On the other side, we'll expect some fireworks for the Pakistani opening batters. Let's get to hear from Altaf. Good evening to you. Thank you very much, Mr. Shalzar. And we've been mentioning about the capabilities of both the teams and their form throughout the tournament, unbeaten. The previous match, it was a splendid last over from Shafiq to defend just 7 runs in the final over. And we have witnessed a masterpiece from CCRC always in every match throughout the tournament. And it is always the 2 spearheads, face-to-face, 2 bowling spearheads. It is Omar Afridi against Sharin. India versus Pakistan, literally. 2 fast bowling captains face-to-face each other. And their batters are really in some form. There are some big hitters in the top for M3 Tigers. Rauf, there is Sajid, there is Rajit. And on the other hand, there is Shahid, the man in form, one of the leading run getters in the tournament so far. Unfortunately, in the previous match, Udupi cricketers couldn't cross the line. That was a South Karnataka derby, an interesting match, and I hope you have all enjoyed that one. And after this, here comes an international derby. It's almost India versus Pakistan match now. It's 2 bowling, fast bowling captains face to face against each other. One of the best match in the tournament. 2 unbeaten teams coming face to face, and it will be nothing more than less than an entertainment. And it was the CCRC, they won the toss and elected to bat first. They know if they can score some runs, and they have the ability, they have the bowlers to defend any sort of total here. They are a bowling mighty, but they have a very good batting lineup as well. And it is always Shahid on top with Atiq. These 2 batters, it's always a nightmare to any opening spell bowlers.
any sort of bowlers, because both of these batters are really in some form. And throughout the tournament, especially in the previous match, we have witnessed some fireworks from both of these batters. They are shining and leading from the front in the batting lineup, and whereas Omar Afridi has led the team with his bowling abilities from the front in the field as well. Now we will go to the presentation ceremony for the previous match. The South Karnataka Derby Udupi Cricketers versus BT Gang. And we request Mr. Firoz Kaka to hand over the man of the match. And the presentation ceremony for the previous match, BT Gang versus Udupi Cricketers. BT Gang won the thrilling match, and without any doubt, the man of the match for the previous match, it is Parvez Pajju for his brilliant captaincy, and he was leading from the front with some brilliant shot in the batting side, and he is elected as man of the match. And we request Mr. Firoz Kaka to hand over the man of the match award to Parvez Pajju for his brilliant captaincy and batting display. You can see on the screen the presentation ceremony for the previous match. Firoz Kaka hand over the award to Parvez Pajju. And let's come to the match, the ongoing live match here. The most thrilling and one of the best. Nothing less than any entertainment. It is CCRC versus M3 Tigers. And the two opening batters in the middle, Shahid, as usual, with Atiq. The left-hander in the non-strike, Atiq, and the right-handed big man and the strike. Right arm over, straight away, going for a gentle flick to the leg side and after mark in style, Shahid. And Vaishak is a brilliant, useful, handy all-rounder. Vaishak always on top in the batting and bowling. And it is the left-handed dangerous batter, Atiq on strike. It is Vaishak against Atiq. Right arm over the wicket, Vaishak to left-handed Atiq on strike. Similar style of shots from the first two balls. This time a left-hander, and after marking style, 2 runs coming from the first 2 balls. Just checking how the ball is working here. And today the climate is much better than yesterday. It is not so cold today. Again, trying to sneak a single there and sent back by Atiq, not interested. That was a yes no condition, but fortunately no danger. Not going for any big shot in the first over. Wondering what is going on. It was almost a full length in the slot, and gentle push inside the circle, and it's a dot ball. That is a shot of a man in form, cover drive, and a fielder chasing, and no chance whatsoever. It travels and over the boundary line. The first
First boundary of the innings comes from the bat of Shahid. It takes the score to 6 runs. There was this brilliant shot finding the gap between those two fielders in the offside. First boundary for Shahid and first boundary for CCRC. Again, right arm over. Wide shot to Shahid. Just trying to guide it behind the point fielder, but that is not executed well and ends up in a single. Not well timed. This brings Atiq on strike for the second time. Has faced on balls and is on 1 now. And the final ball of the over. The checking shot from Atiq. Just a gentle push, and with a single he keeps the strike end of the over number 1, and it is 8 without loss, with Shahid batting on 6 from 4 with a boundary and Atiq batting on 2 from the first 2 balls. A slow start to the innings with just 8 runs coming from the first over, just 1 boundary. And there is no doubt that the second over, the new ball will be shared with Mawfaz. They are the 2 top end bowlers for M3 Tigers. The skipper is always considered him as a death bowler. You can see a lot of crowd today getting into the ground. The climate is much more favorable today, and it is the knockouts and quarterfinals going on. 4 teams will be marching on to the semi-finals, and there are a lot of spectators here, and that was no short of an entertainment in the previous match, and there are words coming here, and people are watching, thousands of people watching through online from YouTube, from ACL Live. The stands are a little bit empty, but there are crowds here and there, and here we go. Mafaz around the wicket, and that is punished. That was a short pitch 1, and getting under it in a good position and pulled it over the mid wicket for a big 6. What a shot that is. Over the mid on fielder. That was a biggie. Took the elevation, big height, and the distance as well. You can see that was a very easy short pitch delivery. Had a plenty of time getting under it and pulled out a brilliant 6 at the right time. First ball, first 6. Again, this time a flick. And there is a protection in the deep square leg, and straight to the fielder. 1 bounce to him. It's just a single. It was a good shot, but there was a protection in the deep. And the score is now 15. 7 runs coming from the first 2 balls. It's always the pressure on the bowler. And Shahid will try to make use of it. Is a big hitter. Is in good form as well in this tournament. You can see the for the right hander, he comes over the wicket, Mafaz, and that was right in the block hole and outside the off stump. That's the best length to bowl, not giving
any chance to for the batter to getting under it and hammer it. One of the best ball to man in form. "15 from the first 9 balls of the innings." Now Mafaz again, right arm over the wicket to Shahid, right-hander. Oh, he is trying to get in the position, but it is well bowled. Very well bowled, low full toes, and it's never easy to put it away. He's trying to get closer to the stumps, deep in the crease, and go big in the leg side. But it was very well bowled from Mafaz. He's a very clever bowler. He can read the batter very quickly. Atik on strike now. This time again through the square leg. Straight to the fielder, just a single. Rotating the strike. MC Tiger shouldn't mind this. It is only a singles coming now at this point after that big 6 in the first ball. And already it's an expensive over so far, considering the conditions of the ground. And still, can he finish it off without any further more boundaries? Once again trying to get deep in the crease and go big, but swing and a miss, and end of over number 2. That is a very good final ball of the second over from Mafaz. And end of over number 2, and it is only 17 without loss. And that's a review given for wide. And the umpires are checking it. And it's end of over number 2, and it's 17 without loss. Still the two openers in the crease. This is a big advantage, and they will have to capitalize on it. CCRC, they are capable of some big shots, really capable. One of the best side in the tournament. Both these unbeaten, marching to the quarterfinals, and they are against each other, upon each other, and they will try to cross this line and get into the semi-final spot. And this big man to bowl the third over. Resume the match. The third over. The big man, the man in form who defended 6 runs in the final over in the previous match. It's a great bowler. He's so good to any batter. Nevertheless, the man in form or not a man in form, anyone it could be. But Shafiq, he sticks to his basics and starts off with the dot ball. That was a very well executed first ball.
You can see in the screen there was a discussion going on with the umpire. The keeper has removed his gloves and he had grabbed the ball with the removed gloves. It's always any appliances, any tools, any pads in the ground. If you touch it without wearing it, it is a penalty, 5 runs. Had to pay the price for that, and this time going for a big shot, trying to get under it. That is dropped. That was an easy catch, but it wasn't judged well. That was a missed opportunity. That could be a big miss. Let's see what they have to pay for that. That's a big miss. You cannot miss such catches for a batter like Atiq. That 5 runs penalty is going to be very crucial in this match, in the quarterfinals. This time trying to go big again. Swing and a miss onto the pads. And the dot ball again. The score is now 24. Trying to hammer it through the offside. That was well balled, good length. And trying to get for the 2. As he completed. Yes, he is very quick. The call was very clear too and responded very well. It's a very good running between the wickets. No second thinking. They were determined to take the second run. And this time he loses short pitch and a bit of more time and just hammering it through the mid wicket. And second 6 in that area for this little man. He's a short man, but if you get any short pitch delivery, he is going to hammer it. He gets the elevation and he gets the distance. The climate and the wind speed is favoring the batter, left-handed batter, to go on the leg side. Slightly short and picking it very early, Atiq. Again, Atiq, this time very well, but good comeback. Right in the block hole, outside the off stump. Almost on the 5th stump. And with this ball, with this single, it is end of over number 3. And it is 33 without loss. And it is 2 minutes strategic timeout. We will get back to you in short while.
And it's end of the strategic timeout, and we will get back to the match. Fourth over, and it is the skipper brings up himself, Sherin. Sherin to Atiq. It's a good contest here. The best to the best. Oh, very well balled, but very unfortunate, getting under edge, and the ball is traveling behind the wicket keeper, and that's a boundary for Atiq. Very fortunate. They don't mind how it comes. It's a boundary. CCRC. That missed catch, the previous over. An extra life offered for Atiq. You have to pay the price. He's punishing you. Now it's already, we are 6 and a 4 after that. The score is just flying now. It's 37. First ball of the fourth over. What a start to the over. Putting pressure on the skipper. Trying to keep it away from the batter. He is trying to hit through the leg side, whatever close to his body, and he's trying to keep it away from the batter, but it's a bit too far, and it's called wide. This is what pressure does. Even if you're a best bowler, you have to hold your nerves. This time right on the money. Sheer pace. No time whatsoever for the batter. Right on the money. They managed to sneak a single there, leg byes. Takes the score close to 40 now. It's 39 without loss. There are still the two openers in the middle. Shahid again on strike, this time against Sherin. Straight up in the air, two fielders going for it, and just sails over the rope, over the two fielders, straight over the bowler's head. And that's a big hit. Shahid is a big man. He can clear any sort of distance. It was very high and just sails over. What a time to bring up the 6. His first one. Second boundary in the over. First a 4 and a 6 now. Already 12 runs coming from the first 3 balls. This time pitching it short, keeping it short, and going for a pull shot this time, but still manages to get the boundary through the fine leg. Boundary is coming here and there. Everything is turning into gold dust for CCRC. What a fortune they are bringing here. There was a miss hit in the previous over from Atiq, and that traveled to the boundary. And this time again from a miss hit from Shahid, the big man, and it ends up in the boundary. You have to feel for the bowler, changing the length, pulling it short, but still you couldn't manage to keep it for less than a boundary. It's going to be a very expensive over now. Already 16 coming from it with 2 more balls to go. Trying to take attack against the best in the side. They know if you attack the skipper and the best in the side, you are always on the front foot. And that was a checking going on for the you need to have the presence of mind when you are in a crucial stage of the match. Another penalty, 5 runs.
any sort of gears in the ground, you'll have to pay the price. And this time punished, and the fielder getting under it. Oh yes, it was not timed well. Very unfortunate. It's a miss hit, and straight to the fielder. At one stage, it was felt like it will travel to the boundary, but it was miss hit, and ends up in getting the wicket of Shahid. The first man departs for CCRC. Really, this should bring some fortunes and some confidence and momentum in the side of M3 Tigers. The skipper is clearly isn't happy because they have punished with 10 penalty runs with the same mistake. It was a penalty in the earlier stage of the innings, and it is again repeated, and they have costed again the next 5 penalty runs, and it is going to be very costly. Any gears without use in the ground, if you touch the ball with the gear, you'll have to pay the price. Now another right-hander to join Atiq in the crease. It is Omar Afridi, the skipper to skipper. It's a great contest. The skipper against the skipper. It's Shireen to Omar. Still one more to go. It's already 18 runs coming from this over, excluding the 5 runs penalty. And he has managed to get rid of Shahid. This time outside the off stump. It was in the legs, outside the leg stump in the previous ball. Now it's outside the off stump, trying to get in the offside. And ends up conceding an extra run there. Score is already 57, 4th over. And it's a very big total already. Very good shot this time in the leg side. There is a protection in the deep, trying to, yes, he covers the ground and grabs it. And it's only 1 to end the over number 4. And it is 58 for the loss of 1 wicket of Shahid. And Afridi will keep strike. Now Anis, right arm over the wicket to Omar Afridi. And it's a miss hit. Very lucky indeed, the bowler. That was almost a boundary there, but it is straight to the man in the backward point. That was a top edge. Very lucky indeed. It didn't travel to the boundary. Already they have got 2 boundaries in that area, CCRC. Now Atiq on strike. This is going to be interesting. After a long time, Atiq on strike.
in the slot, but along the ground, straight to the fielder. Only one there. Score reaches to the 60 mark now. The par score in this ground. It's going to be very crucial. It's a knockout match, pressure match. This time in the slot, straight. Oh, straight to the fielder. What a judge catch. Well judged catch. In the cow corner, it's Sajid. There wasn't enough power on it. Covering few yards, and Sajid making no mistake. And the skipper, Omar Afridi, has to depart. He has tried to join the party, but unfortunately had to walk back. Not big danger done from this man. They'll have to take the advantage of the wickets fallen. The new batter on strike. And trying to get some dot balls and trying to keep the runs climbing. Stop the runs climbing. And something around 70 will be at least a gettable target. Anything above 70 going to be very risky. Late cut straight to the fielder. Gets off the mark in the very first ball he faced. The new man, Aswar. He can also hit big. He can really go big. It's all the big hitters there in that lineup. Never easy. Have to stick to your basics and bowl well. This time again, Atiq through the same area. Got a lot of singles there today. He's trying to get the elevation. And that's one bounce to the fielder. It's a leg side dominated batter. But still he manages to get out of the park to the other part of the ground. Aswa, this time it's straight. Straight. Fielder going for it. Oh, just falls short. A few inches fall short of the fielder. And it's a very good run in between the wickets. And they got then extra run from the fumble. It was almost a catch, falling a bit short. And the score is 64 on the cards now. 64. In a knockout match from 5 overs with an over left. It's going to be very expensive bowling. They dropped earlier a catch of Atiq. That's they had paid the price already. Is still in the crease. Breakthroughs and wickets here and there in regular intervals can put pressure on the batting side, but they fail to do that. The second wicket down after the 5 overs, and it's already a big total, 64 on the cards, and it's never easy for any side in a knockout match. Now Shafiq. They'll try to restrict under 70. They'll go for 2. Should be quick. Oh no, I think he's short of his crease. The umpire will refer to the third umpire. I'll have to have a check of that. I think he is short of his crease. Desperately he needed the strike. Oh yes. Oh yes. It is out. My guess was right. He has to walk back. Desperately he needed the strike back. It's a big relief for M3 Tigers now. It's 65 with 5 more balls to go. He'll try to restrict them
well inside 70. Anything over 70 will be psychologically, it will be a big task. If you say 69 and if you say 70, it's a big difference in a 6-over game. That was a very good innings from Atik. To walk back in the final over. He had some fortune in the earlier stage of the innings, but he had properly made use of it. And this man, new man in the crease, he had hit 3 sixes, 3 consecutive sixes in the previous day. This time he continues his form. Oh no, it is not far enough. Straight to the field. He has to walk back. Golden duck this time. It is Shafiq to Suhail, and it's a golden duck this time. He decided to go big straight away, and that was not enough on it. Straight up, not getting the distance, and he walks back. You can see 2 fielders going for it, and in the end, it was safely judged. Now we have got 4 more balls in this innings, and they are on 65. Good so far in the final over for M3 Tigers. We have witnessed what he can do in the previous match from Shafiq. He has successfully defended 7 runs in the final over. It's never easy. With 2 set batters in crease with Tony Archer. And it's a different story here. This time in the slot, straight up. Bowler going for it, chasing for it. Oh my goodness. Landed safely. Almost 3 fielders around, and it's fallen in between all of them. There was no call from anyone. It's not easy for a bowler after his follow-up to chase, and he's always running backwards. And it's always going to be very tough. And it landed safely, and 2 runs considered. That's going to be very crucial, more than a wicket. 67 now. 3 more balls to go. His second over, Shafiq. This time much more flatter in the leg side, straight to the fielder, and it's only 1. It's a tidy final over. No boundaries coming in this over so far. Already a wicket. And it's Aswar on strike. Aswar. Shafiq to Aswar. And he is so good. Shafiq is so good. He's trying to sneak out his single there from the dot ball. And the big man Abbas walking back. Hasn't faced any ball. And it is Gul Hayat will take the non-striker, and after that run out. And it is final ball of the innings, the ultimate ball of the innings, first innings. Aswa, a very well bowled from Shafiq. He's such a good bowler. He had conceded only 16 from his 2 overs with 1 wicket, and it's all 69 on the cards. Yes, they have managed to keep it under 70. This is what I have been talking about.
They were at one stage cruising over 70 or 75. You felt like they will reach even 80 mark. But it was a brilliant job done in the final over from Shafiq. He's so good, brilliant and at the end of the any innings in the death overs. Is such a brilliant, clever bowler. Restricted them to under 70, so it's an advantage in the final over. But they have to climb a big mountain of runs, and we'll come up with the chase in a short while. And there is a change in voice. We'll have Mr. Shelzar back in the commentary box. Beg your pardon. It's a time for Hindi prime time. Mr. Chirag will entertain you with some Hindi proverbs and some funny quotes. Thank you very much. यस धन्यवाद अल्ताफ भाई। 70 इज टारगेट, जिसमें 10 रन वो काफी मायने रखने वाले। लेकिन अंपायर की तारीफ होगी मंसूर और नियाज भाई, बहुत बढ़िया अंपायरिंग। यानी हम हमेशा कहते हैं कि एक छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी हो जाती है। 10 रन की गलती, वो भी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, ये बहुत मायने रखने वाली है। क्या ये जो 10 रन है, क्या वो इस मैच का टर्न पॉइंट हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में ऐसा ही होता है, छोटी छोटी गलतियां कभी बड़ी हो जाती है। लेकिन 70, जैसे कमेंट्री की जिस प्रकार से कमेंट्री को छोड़ा था जब शेलजार भाई ने, उन्होंने कहा था कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला है, और जिस प्रकार से ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, मजा आने वाला है नो डाउट। तीसरे मुकाबले की ओर जाएंगे, क्योंकि तीसरा मुकाबला यस 70 इज टारगेट, 70 इज टारगेट। अब जहां से दोनों अंपायर अब जा चुके हैं अंदर, और मजा आने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है। जब हम बात करते हैं ये ऐसे मुकाबले की जहां पे दो टीमें आमने सामने, हालांकि टीमों के नाम कुछ अलग है। एमटी टाइगर्स जो मैन इन ब्लू, और अगर मैन इन ग्रीन देखें तो सीसीआरसी वॉरियर्स जिन्होंने पिछले साल की प्रतियोगिता जीती है, वो इन एक्शन है। तो मजा आने वाला है। सरदार भाई ने कुछ वहां पे कान मंत्र दिया है सभी खिलाड़ियों को, और उसके बाद वो वापस अपने डकआउट्स में आएंगे। लेकिन ये मुकाबला मजा आने वाला है। इस मुकाबले में दर्शकों का मनोरंजन होगा नो डाउट। हमारे दोनों कैमरामैन, हम अगर मेन कैमरे की बात करें, इस मेन एंगल पे हमारे मनीष निजाई, मैन फ्रॉम विरार,
और दूसरी जगह हम देख रहे हैं हमारे जन्मेश मेहर जो साइड एंगल पे है। प्रारंभिक बल्लेबाज, अब यहाँ से प्रारंभिक बल्लेबाजों को जाना है कि आज कुछ बदलाव होंगे प्रारंभिक बल्लेबाजों में, क्योंकि हर बार मफास और वैशाख यही देखते हैं, और मफास तो ऑलरेडी तैयार है, और वैशाख क्या वो आज वो क्रैकलिंग इनिंग खेलेंगे, क्योंकि मफास और वैशाख, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान में अब आ चुकी है, और 70 रनों का लक्ष्य का पीछा बड़ा मुकाबला प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 डे नंबर 12 और क्वार्टर फाइनल नंबर दूसरा। और इस दूसरे मुकाबले में जहां पे मजा आने वाला है, क्या यहाँ से इस मुकाबले में वो दोनों जिस प्रकार से खेले हैं टीमें, ये मुकाबला किस प्रकार से जाएगा। लेकिन तीसरा मुकाबला विक्टोरिया ट्रैवल्स वर्सेस यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट, ये दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आ जाए। गेंदबाज के लिए गेंदबाज नन ऑलरी, मुझे लगता है यहाँ पे उमर अफरीदी, ये काफी तेज तरार गेंदबाज है। उनके सामने मफास स्ट्राइक लेंगे, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज वैशाख। ये मुकाबला तगड़ा होने वाला है, और इस तगड़े मुकाबले में हम देख रहे हैं कि मैन इन ब्लू क्या इस मुकाबले को अपने पास खींचेगी, या फिर मैन इन ग्रीन इस मुकाबले को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, ये देखना होगा। पहली गेंद कमेंट बॉक्स एंड से। पहली गेंद रिवर्स, और देखिए रिवर्स सक्सेसफुल, व्हाट अ स्टार्ट। इससे अच्छी स्टार्ट क्या हो सकती है। ये जिस प्रकार से इनिंग की शुरुआत हुई, मैन इन ब्लू ने कहा भाई हम भी इस मुकाबले में रंग भरने के लिए तैयार है, और ऐसा ही होता है। मैन इन ब्लू और मैन इन ग्रीन आमने सामने आते हैं तो वो कड़ा मुकाबला हो जाता है। और आज देखिए क्या शुरुआत हुई है, दोनों टीमें बड़ी है, दोनों टीमों में दिग्गज खिलाड़ी है, और मजा आ रहा है। शुरुआत पहली गेंद पे चौका, शुरुआत अच्छी हुई है। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक आउट में करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, और सिंगल। देखिए पहले 2 गेंदों में रन है 5। सेवेंटी का टारगेट है, इसका मतलब है और ओवर में 11 से ऊपर रन चाहिए। और पावर प्ले ये काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि पहला ओवर है। देखिए 2 जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे तैनात है, और साथ ही साथ डिप स्क्वायर लेग ये 2 खिलाड़ी, और डिप पॉइंट ये 3 खिलाड़ी तैनात है पावर प्ले में। इस बार तेज तरार गेंद जरूर लगी है पैरों पे, मूवमेंट भी नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। और क्या यहां से बल्ला लगा है, जिस प्रकार से ये गेंद लगी, बल्ले से लग के गेंद गई। 1 रन का इजाफा, स्कोर मूव्स ऑन 6। 3 गेंदे 6 रन। .66 का अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है रियाज भाई। ओहो हो व्हाट अ बैटिंग मफाज भाई, एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे। व्हाट अ बैटिंग, चौका, 4 रन। इस प्रकार से ये स्ट्रोक खेला उमर अफरीदी को, अनुमान ऐसे स्ट्रोक खेले नहीं जाते। उमर अफरीदी ऐसे गेंदबाज है तो तेज तरार गेंदे करते हैं, लेकिन इस बार आज देखिए जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, मजा आ रहा है। आज मुझे लगता है थोड़ा सा दिमाग पे क्या बर्फ रखा है,
ये हो सकता है, क्योंकि ये अब तक का स्कोर देखा जाए 10 ऑन बोर्ड। ओहो, काफी अच्छा शो, गेंद हवा में, फील्डर आएंगे, अपने शरीर से जरूर गेंद को फील्ड किया। वैशाख यहाँ पे खतरे में हो सकते हैं, और ये क्या, ये क्लोज मामला हो सकता है, उच्च न्यायपालिका के पास आएगा निर्णय। वैशाख, कॉल खराब था। वैशाख बैक टू दी पवेलियन। ओ यू टी आउट। ये देखिए, काफी नजदीकी मामला था और वैशाख पहुंच भी नहीं पाए। बहुत बहुत बड़ा झटका, और मपास थोड़ा सा अपने आप पे नाराज होंगे, क्योंकि ये बड़ा विकेट था। वैशाख ऐसे बल्लेबाज है जो मुकाबले को बदल सकते हैं, लेकिन आज मैन इन ब्लू रो भाई, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि आज वो जिम्मेदारी वाला टॉनिक लेना होगा कि आज अपनी टीम को अगर जिताना है तो। स्कोर अब तक का देखा जाए 11 ऑन बोर्ड। पहले ओवर की आखिरी गेंद, 11 रन अब तक, 70 का टारगेट का पीछा, और 11 अब तक बने हैं। देखिए इस बार वैशाख थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज है, थोड़ा सा आज प्रेशर में ही थे, लेकिन फिर भी आज देखना होगा कि आज क्या ये डर होने वाला है। ये डर, हम हमेशा कहते हैं रिक्स है तो रिवॉर्ड है, यहाँ पे रिक्स ली थी लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिला, विकेट मिला वहां पे। अब स्कोर कार्ड की बात की जाए, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 11, 11 रन। प्रेशर दोनों टीम के ऊपर है, मैन इन ब्लू पे भी और मैन इन ग्रीन पे भी, क्योंकि मुकाबला अब कांटे की टक्कर होगा, नो डाउट। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर, इस बार गेंद को आने दिया, खतरा यहां पे हो सकता था। ये कॉलिंग देखिए, रॉब भाई यही कह रहे भाई आपको कॉलिंग करनी चाहिए मफास। ओवर समाप्त होते पहला ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 12 रन, 12 ऑन बोर्ड। एक ओवर 12 रन, अब आने वाली 5 ओवर में 58 की जरूरत, 58 रन से। देखिए दर्शक, आज भारी मात्रा में ये मुकाबला, अब मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल में है दोनों टीम के। 30 गेंदे, 58, मुकाबला तगड़ा। और ये दर्शक, लीप कल के मुकाबले की हीरो, आज थोड़ा सा बातचीत करते हुए रमजी सर और जयसल भाई के साथ, क्योंकि कल क्या वो मुकाबला, ऐसा सामने वाली टीम ने ये सोच लिया था कि फवादुल्ला पे ट्राई करेंगे, लेकिन नितिन भाई ने कहा मैं डार्क हॉर्स हूँ, और जिस प्रकार से टूट पड़े, और रियाज भाई को कल डांस करने का मौका उन्होंने ही दिया था, आज करने का मौका देंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये मुकाबला भी बहुत अच्छा होने वाला है। यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट वर्सेस फ्लाइंग विक्टोरिया ट्रेवल्स, ये दो टीम आमने सामने होगी। गेंदबाजी के लिए रावल, बाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार अच्छा गेंद कनेक्शन हुआ है, लेकिन कितने रन देके जाएगी,
पहला रन तो तेजी के साथ भागे, दूसरे की मांग होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी संतुष्ट। 13 रन स्कोर कार्ड पे, 2 हो सकते थे, लेकिन एक भी संतुष्ट। स्कोर मूव्स ऑन 13, 13 मफास। आज मफास का बल्ला जिस प्रकार से बोल रहा है, थोड़ा सा जिम्मेदारी क्या लेके खेलने वाले हैं मफास। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 चौके के साथ, 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं रावल। ओहो हो, बाल बाल बचे। अगर गेंद थोड़ी सी 19-20 इधर इधर होती तो फिर डंडी गुल। अच्छी गेंदबाजी। अब तक का स्कोर 13। Yamites restaurant won the toss and elected to ball first. रावल। अच्छा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्लेबाज गेंद को पढ़ नहीं पाए, डॉट बॉल। और रोब भाई वही जाके कह रहे हैं, भाई आपको थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। अब तक का स्कोर 13। पहले ओवर में रन आए 12, इस ओवर में रावल ने कंट्रोल किया मुकाबले को, और ऐसा ही करना होगा। फिर से रावल, इस बार डंडी गुल, वाइड बॉल, विकेट। बड़ा विकेट, मफास बैक टू द पवेलियन। 13 पे लगता हुआ झटका नंबर दूसरा, न्यू मैन इन। रिजनी इंपैक्ट प्लेयर, रिजनी इन, जाफर आउट। अब यहां से मफास अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छा शो पहले ओवर में चला, लेकिन दूसरी ओवर में वो गेंदबाजी का मोर्चा जिस प्रकार से लाया रावल, व्हाट अ बॉलिंग, क्या गेंदबाजी की है। इस ओवर में अब तक 1 ही रन और 1 विकेट। रिजनी बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और बाएं हाथ के बल्लेबाज देखना होगा क्या करेंगे। ओहो हो, बल्लेबाज को खड़ा कर रहे हैं जगह पे, व्हाट अ बॉलिंग। यही तो हम हमेशा जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो तेज गेंदबाजों के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, और जिस प्रकार से ये सारे खिलाड़ी है, जिस प्रकार से हम ऊपर अफरीदी का पहला स्पेल देखते हैं हमेशा, और अब रावल, ये इन्होंने गेंद बल्लेबाजों को बांध के रखा है। अच्छी गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस थी, इस गेंद को हल्के हाथों से ढकेला, जब तक फील्डर जाके वहां पे फील्ड करे, फंबल, लेकिन रोप नहीं तैयार थे वहां पे। और ये नो बॉल, इसका मतलब है फ्री हिट। क्या अब इसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज रॉफ, क्योंकि इनके मन में अभी कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री हिट है, और इनको ये मुझे लगता है फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विकेट नहीं मिलेगा, विकेट नहीं जाएगा, सिर्फ रनआउट के रूप में आउट हो सकते हैं, तो बड़ा स्ट्रोक यहाँ से ढूंढेंगे जरूर रॉफ।
गेंदबाज तैयार, रावल, और इस बार गेंद लगी है स्टंप पे, लेकिन 1 रन देके जाएगी। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 16 रन। दो ओवर, ये देखिए दर्शक, जहां पे भी हमारी नजर जा रहे वहां पे दर्शक 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 मुकाबले को देख रहे। अब तक का स्कोर 16। उमर अफरीदी फिर से गेंदबाजी के लिए, उमर, वहां पे थोड़ा सा फंबल, लेकिन डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी, उमर भी अब अच्छा वापसी करते हुए, डॉट बॉल। स्कोर अब तक का 16, और अब उमर अफरीदी फिर से चार्ज करेंगे। अब क्या यहाँ से रोप कुछ अलग करना चाहेंगे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। 365 दिन आपको राह देखनी होगी इस टूर्नामेंट की। और इस बार गेंद और बल्ले में कोई संबंध नहीं, डॉट बॉल। उमर अफरीदी फिर से कमबैक करते हुए, पहले ओवर में रन 12 आए थे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से रनों पे अंकुश लगाया है। रावल का वो स्पेल लाजवाब, वहां से गेम बदला है। फिर से उमर, इस बार क्या ये गेंद, जिस प्रकार से खेल रहे, थोड़ा सा बाहर खेल रहे रोफ, इसके कारण समझ नहीं पा रहे गेंद कहां जा रही है, डॉट बॉल। फिर से उमर, व्हाट अ बॉलिंग, सीधा जड़ में। बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रहे कि वो भाई कुछ खेले। उमर अफरीदी पहले ओवर में 12 थे, इस ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन, एक भी रन नहीं, माफ कीजिए, डॉट डॉट और डॉट की कहानी, चारों गेंदे डॉट। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, पॉलस बैक ड्राइव, और वहां पे 1 रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव ऑन 17-17। आखिरी गेंद, इसके बाद आएगा रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इस गेंद के बाद अच्छी गेंदबाजी, 19 गेंदों का खेलाना बाकी, 53 रनों की जरूरत है। क्या ये मैच बदल सकता है? मेरे हिसाब से बदल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबले आगे बढ़ रहे, 19 गेंदे 53 रनों की जरूरत, 19 बॉल 53 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। यहां से अगर 2-3 बड़े हिट आते हैं तो मजा आएगा। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, डॉट बॉल। ये रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चुका है, रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चुका है, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक 2 मिनट का। आप कहीं ना जाए, फिर से आए और मजा आएगा सेकंड सेशन में।
यस, रेड पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब समाप्त हो चुका है। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि आने वाली 18 गेंदे, रन चाहिए 53। और थोड़ा सा ध्यान रखें, दोनों ही टीमें, मुकाबला काफी अच्छा चल रहा है, तगड़ा चल रहा है, नो डाउट। और अब इस मुकाबले में 18 गेंदे 53 रन। मुकाबला नंबर आज के दिन रात का ये दूसरा है। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला आएगा जहां पे यमिटस रेस्टोरेंट और दूसरी जगह हम देखने वाले हैं टीम विक्टोरिया ट्रेवल्स को। तो वो बड़ा मुकाबला आपके साथ है, लेकिन 18 गेंदे 53। अतिक लेफ्टी गेंदबाजी के लिए, इस बार व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद गोइंग गोइंग गोइंग, और ये कैमरामैन के पास जाती हुई जन्मेश मेहर के पास 6 रन, सिक्सर। जन्मेश मेहर उसे पकड़ सकते थे। लास्ट ईयर कुशल चौधरी के लिए वो मौका मिला था जहां पे कुशल ने उस गेंद को कैच किया था। जिस प्रकार से ये छक्का आया है, मैच में थोड़ा सा बदलाव। अब 17 गेंदे 47, 17 बॉल्स 47 रन रिक्वायर्ड। इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा सा फंबल और 2 मिलेंगे, नो डाउट। अब मुकाबला बदल रहा है। यहाँ पे अतिक ने थोड़ा सा वो धोनी स्टाइल वाला किया है, लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाज क्या वहां पे सेफ है, उच्च न्यायपालिका के पास। थर्ड अंपायर, ये काफी क्रूशल होगा, थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। थर्ड अंपायर क्या यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा फंबल, फिर गेंद, और ये बल्लेबाज सुरक्षित, नॉट आउट। बल्लेबाज पूरी तरह से सुरक्षित। थोड़ी देर के लिए बल्लेबाज को लगा कि मैं आउट हूं, लेकिन सुरक्षित। आप रिप्ले देख सकते हो ऑन स्क्रीन क्या हुआ, जिस प्रकार से बल्लेबाज पहुंच गए थे। अच्छा, मैं कहूंगा जिस प्रकार से अतीक ने किया था वो काफी अच्छा था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। 16 में अब चाहिए 45। अच्छी गेंद, अपील लाउड हो रही है, लेकिन वो ग्राउंडिंग होगा इसे लग रहा है, इसी कारण अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं। डॉट बॉल, 15 गेंदे 45, हर गेंद पे चाहिए अब 18। हर ओवर में अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई। अब आने वाली 14 बॉल्स रिमेनिंग, 44 की जरूरत है। अब यहां से लेफ्टी को भी थोड़ा सा क्या वो यहाँ पे दमखम दिखा सकते हैं मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि अब दमखम दिखाएंगे तो ही मुकाबला बदलेगा, नहीं तो मुकाबले में जान डालने के लिए फिर आपके लिए वक्त नहीं होगा। 14 बॉल्स 44 रन रिक्वायर्ड। ये होना चाहिए था बड़ा स्ट्रोक। डॉट बॉल, अतिक लेफ्टी, वाटर बॉलिंग, डॉट बॉल। 13 गेंदे 44। मैं रिक्वायर्ड रन 20 का, 13 में 44। फिर से गेंद बल्ले पे नहीं आई, लेकिन 2 रन तो मिलेंगे, क्या 4 रन मिल सकते हैं, और ये चौका। अब 12 में रन चाहिए 40, 20 रन पर ओवर, 12 गेंदे 40 रन। बारह गेंदे 40। ये चौका देखिए, चौका आपने देखा नहीं तो फिर से देखिए एक बार, अच्छा प्रयास वहां पे। 12 गेंदे 40। अब गेंदबाजी के लिए सुहेल,
12 में 40 रौफ। क्या अब गेंदबाज के मन में खौफ कोई निर्माण करेंगे, क्योंकि जरूरत है। ये मैन इन ब्लू कह रहे हैं भाई थोड़ा सा मैच को बदलो, नहीं तो फिर मैच हाथ से निकल जाएगा। 12 में 40, वो 10 रन भी मायने रख रहे हैं आज, काफी बहुत कुछ। 12-40। सोहेल, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस, पहला रन तेजी के साथ भागे। क्या दूसरे की मांग हो सकती थी? नहीं, लेकिन नहीं, एक ही रन। 11 गेंदे 39 रन। अब लेफ्टी जिस प्रकार से है, रिजनी क्या यहां से थोड़ा सा मोमेंटम बदल सकते हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दूसरे हाथ को भी वहां पे साथ देना होगा। अगर स्कोर बढ़ाना है तो फिर दोनों बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, एक से कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफी दूर है मुकाबला ये। और सीसीआरसी वॉरियर्स इस मुकाबले में अपना शिकंजा कस रही है अब तक। बॉल, और यही बोल रहा था कि शिकंजा कस रहे और विकेट। न्यू मैन इन शफीक। शफीक बल्ले से भी अच्छे खेलते हैं, गेंदबाजी तो इनकी अच्छी है नो डाउट, लेकिन बल्ले से भी अच्छे खेलते हैं। अब इक्वेशन है, सुहेल टू शफीक। और अच्छा स्ट्रोक इस बार, जिस प्रकार से गेंद को खेला, सामने गेंद थी, वहां पे फील्डर है उमर, गेंद को फील्ड किया, 1 रन। सुहेल टू रॉफ। रॉफ को बड़े स्ट्रोक तो अभी चाहिए चाहिए नो डाउट। सुहेल, ये एक बड़ा विकेट होने चाहिए। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को खेला, सामने फील्डर है, एक से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर मूव्स ऑन। कितना हुआ? 33। अब अभी भी 37 की जरूरत है, आने वाली गेंदे है 8। 8 गेंदे 37 रन। अभी भी मुकाबला मैं कहूं कि हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है, वो शब्द ही बड़ा है। लेकिन गेंदबाज तारीफ उनकी ज्यादा करूंगा, खास करके उमर अफरीदी। इस बार खराब गेंद, फायदा उठाया, गेंद नहीं रुकने वाली, ऐसा लग रहा है। 4 रन, चौका, एसीएल चौका लगता हुआ। अब मुकाबले में जान डालनी होगी, क्योंकि आने वाली गेंद है 7 रन चाहिए। 33। 7 balls remaining, 33 runs required. आखिरी 6 गेंद। गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं हुआ अब तक, क्योंकि लास्ट बॉल है। लास्ट गेंद पे क्या होगा? शफीक क्या बड़ा स्ट्रोक चाहेंगे? ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, पहला रन तेजी के साथ भागे, 1 से ही संतुष्ट।
6 गेंदें आनी शेष और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 32 की जरूरत है। 6 बॉल्स रिमेइंग। 6 गेंदे 32 रन। छह गेंदे 32। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला जहां पे यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट और दूसरी जगह हम देखने वाले हैं टीम विक्टोरिया ट्रैवल्स। रियाज भाई को इन एक्शन हम देखेंगे। छह में 32। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, एक ही रन। अब 5 में 5 सिक्सर लगाने होंगे और ऐसा करने नहीं देंगे गेंदबाज, ऐसा अनुमान होता नहीं है, कम बार देखा गया है। लेकिन क्रिकेट, मुझे वो यश दयाल का ओवर याद आता है आईपीएल में, और वो आईपीएल वाला 5 सिक्सर। आज रोब भाई के दिमाग में, उनके बैट में, उनके शरीर में रिंकू सिंह का प्रहार होना चाहिए। नहीं, इस बार ये डॉट। अब ये सियासी वॉरियर्स इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी, शिकंजा कस लिया है, डोमिनेट किया है। 4 गेंदें शेष। लोअर फुल टॉस, लेकिन 1 रन। अभी औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता को कंप्लीट करेंगे आखिरी 3 गेंदों के, और सीसीआरसी वॉरियर्स टॉप 4 में जगह बनाने के लिए सिर्फ 3 कदम दूर। कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ा सा हल्का सा बदल करने वाला है। अंग्रेजी के बहुत ही मशहूर कमेंटेटर शिलजार भाई हमारे साथ जुड़ेंगे इस 3 गेंदों के बाद। ये धीमा गेंद है, उंगलियां फेरी, डॉट बॉल, डॉट बॉल। और अब आखिरी 2 गेंदे, लास्ट 2 बॉल्स। ये फुल टॉस गेंद है, लेकिन हाथ में जाएगी ऐसा लग रहा है। विकेट, ये लॉली कैच। और सरदार भाई की टीम पिछले साल की तरह इस साल भी वही एटीट्यूड के साथ अपना स्थान कायम करती हुई टॉप 4 में, क्योंकि पिछले साल की विजेता टीम है ये, डिफेंडिंग चैंपियन। और हम हमेशा कहते हैं कि चैंपियन चैंपियंस की तरह खेलता है। बहुत कम बार देखने को मिलता है कि जो टीम पिछला सीजन जीती है वो अगले सीजन में वैसा ही के प्रदर्शन करे, लेकिन यहाँ पे लगातार एसीएल में सीजन 3 में भी 2 की तरह काम करते हुए। आखिरी गेंद, रन चाहिए 30। वो शाहरुख खान का फिल्म आई थी चमत्कार, ऐसा चमत्कार क्या हो सकता है यहाँ पे। CCRC Warriors into the semi-final. Well played सरदार भाई and team. Well played. कमेंट बॉक्स में हम जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर शिलजार भाई के पास। आपका स्वागत है शिलजार भाई। Thank you, Chirag. CCRC Warriors, defending champions, into the semi-final. What a brilliant performance with the bat. They're filled with a lot of Pakistani, and most of them have completely taken the control and being outplayed. The opposition team, Tigers, were never into this chase once they started losing wickets in the regular intervals. That's been the story so far. Congratulations, CCRC Warriors, into the semi-final. We'll see you tomorrow. On the other side, Sharin and his boys
Tigers had a very bad outing, the must-win game, being completely outplayed by the opposition team. Some brilliant bowling performance. So many bowlers. They have got a lot of options. We quickly move to the next game. So CCRC Warriors 69 for 5 and M3 Tigers just managed to score only 40 runs along 4 wickets. Kept it very slow during the mid overs, and Rauf Bhai was there, but not getting this elevation, not getting enough runs in the mid overs, especially after the brilliant first over. Then Afridi provided the momentum. He set the tone for this most important match for them, and that's how they celebrate Men in Green as convincingly winning against Men in Blue. And thank you so much, Sharon, M3 Tigers, and everyone for entertaining us in this tournament. You have been brilliant, but just not enough performance in the must-win game against a high-flying CCRC Warriors. So welcome back, everyone. We move to the next quarter final. Yummy Taste Restaurant. Sharafuddin, the captain. The time lineup: Mansoor C, Adnan, Sharafuddin, Sahad Ali, Hussain, Mohammad Fazlan, Muhammad Naufal, Riaz, Shafiq, Swaroop, and Hassan Abdullah as the final 11 for Yummy Taste Restaurant. Will be another big contest. So thank you once again, M3 Tigers, Sharon and your boys, for entertaining us throughout this tournament. Come back next time strongly. Thank you. We are into the Super 8s, and we have the best 8 teams out of 24 franchises. On the other side, we have the next team under the captaincy of Said Riyaz, Victoria Travels. What an outing they had. I have to give the man of the match for a brilliant batting performance. It goes to Atik, the man of the match from CCRC Warriors, and he is going to get the man of the match trophy from TPL chairman Flamingos, Mr. Shafi. If you can please give away the man of the match award to Mr. Atik. 29 runs, brilliant batting. He's provided the momentum, he set the tone, and what we have seen in the last innings, some brilliant bowling. Here we go, congratulations, Warriors, into the semi-final. And you can see on screen, giving away the man of the match to Atik by Mr. Shafi from Flamingos. Let's have a look at the team lineup for Victoria Travels for the most important match. They had a brilliant outing in the last match. Lithin had pulled off something phenomenal. As winning that must-win game, some brilliant batting from Lithin. They are up against another big team. Let's have a look at the final 11. Muzawwir, Bilal Hassan, Siraj Papan, Said Riaz, DK, Asif Khan, Lithin KP, Fawadullah, Nazir Muhammad, Kamarul Islam, and Anup. So batting first, Victoria Travels. And Yummy Taste Restaurants all set to go, man in yellow. Two opening batters.
The two scores were not able to chase down in the first 2 minutes. Move to the game number 3 of this big day, the quarterfinals of Asian Cricket League Season 3, right here in Absolute Sports Ground, Yamazoni Cricket Academy, and it's been provided by all this action. This event is presented by Premier Techno Media. Some brilliant support by our associate sponsor and the title sponsor, just as a note. Strategic partner Red Apple Events and Media, Icon Training Center, Creative Edge. Ball has been brought to you by Sixer Gulf Plant, Big Argo Relocation Service, Mabu Contracting Company, EcoFresh, Symphony Events and Production, A Plus Contracting, Al Nool Trading, and all these gift partners who had made a tremendous contribution towards the success of this event. Man of the match from the quarterfinals, he'll be receiving the gift hamper from Calicut Rahmat Restaurant and EcoFresh, plenty of hampers. Let's quickly get into the next game, game number 3. It's on time and we have to complete one more match after this. 10:40 right here in Qatar, and let's have a look at the temperature. It's 16 degree right here in Royan. Feels like 12 as everyone around here is feeling really cold, and absolutely no wind if it's compared to last night. It looks much better weather condition, even though it feels like 13-12 degree Celsius. And absolutely no wind whatsoever from any direction. The batters have to really work hard. So we had more than the pass score in the last innings. Now let's wait and see what they're going to make. Victoria Travels from the allotted 6 overs. I have 2 opening batters there in the middle, Asif and Muzaffir. Ball from the pavilion and right arm over the wicket. It's going to be Naufal. All set to go. Umpire, main umpire, Mr. Manzoor. On square leg, Mr. Niaz. Here we go. First ball. Gentle push towards the mid-off and off the mark in style. And when we come out tomorrow, we'll have one of the best closing ceremony in terms of giving the best 3 rewards for the best 3 players. Sports bikes, the race is on. The leading wicket taker, the best batter, and the man of the series. 3 men are going to touch and feel those 3 sports bikes. Get ready with your driving license, guys. That's the way you start this brilliant piece of peeling, and it's pushed forth single. Right hand batter to the covers and off the mark in style. 2 from 2. Victoria Travels depth in the batting. We have seen some brilliant performance from Lithin last night. He pulled off an impossible task, made it very easy towards the end for his team. Swing and a miss. And asking the question, was there any edge, everyone? Very interesting. Umpire is not interested. It's going to have a word with the square leg umpire. Was there any? Nick, we'll come back to you on that very soon. Just swinging away from the batter. Playing across the line. Has he given? Yes, he has. That's a big blow. Very big blow. Got a big fish. Naufal produced a breakthrough in the very first over. Just 2 runs on the board, and Victoria Travels 2 for 1.
And as expected, Fawadullah walks into the middle. And a little bit of shaky start in the last game, pre-quarter. Was struggling a bit now. This is a big occasion for him. Can he raise to this special occasion? This is quarter final. I need to make at least 60 runs on the board. And anything more than that, he'll take it as a bonus. Yes, Fawadullah to face his first ball in this game. Straight away. Shot and a bit of fielding there, mid-wicket. He kept the eye on the ball. He was trying to stop the boundary rather than going for the catch. Good presence of mind there from the fielder. 3 for 1. As a field on the cow end of this ground and mid-wicket. Deep mid-wicket and fine leg inside the circle. Now for the right-hand batter, he pushed that man towards the offside. Goes to the boundary line. So 3 fielders outside the circle. Deep extra cover, deep mid-wicket. Mid-off, mid-on inside the circle. If we can clear the circle and with the through straight bat, they can produce the boundary. That's given wide outside the off stump, very far. It's an interesting story for this team Victoria Travel. They almost lost the hope last night and came back strongly. Bounced back, some brilliant batting. The man who had phenomenal touch last night, Lithin. Big shot, he'll find the fielder. It's a quiet start from Victoria. Just 5 runs on the board. He lost a wicket. And searching for the first boundary. It's good sensible batting. Pushes for the single and retain the strike for the next over. There was no second run there. Just one single to complete the power play. 6 for 1. Victoria Travels. Let's move on. After the first, just 6 runs on the board. 2 batters are in the middle. That's Muzaffar. 2 from 2 and Fawadullah 2 from 2 as well. Looking for a good partnership here. That's a big game. Knockout. It's a quarter final. When you are through to the semi-final, we'll have the best 4 teams tomorrow. Out of 24 franchises, it's a big tournament. It's getting into day number 13. I'll come back to you on the leading wicket taker and leading run getter in this tournament very soon, right after this over. Let's see who are those players chasing for that 3 sports bikes, having maximum points.
Sada with the wide. Manzoor there into the attack. Not enough elevation as he anticipated. Straight to the field. Oh, the keeper making no mistake. Very safe pair of hands. It's a big wicket. Fawadullah has to depart on the second, trying to clear, getting a leading edge, and just ended up in a safe pair of gloves. Keeper making no mistake. Sahad behind the stump. It's a big wicket. Now the man walks in. Man in form. Lee, jersey number 10. Lethal Lithin. Had some lightning quick yesterday. The kind of shots he played. We'll have to wait and see whether he'll continue his form where he stopped last night. Well, rightly you mentioned, a lot of expectation. And plenty of experience behind this man. He knows what exactly his role is in this team. He's good with the ball, and he was good with the bat as well. Now this is a different game. It's a pressure. Another knockout. This time they need to win this. They need to make at least 60 runs on the board minimum. Seven 4-2 after 1.1, changing the angle around the wicket. Let's push for the single off the mark in style. Okay, 865666, a white Camry. Please pay attention. White Camry 8656. A white Camry car is blocking the way. Kindly remove. Catches the call, catches the call. Oh, has he dropped? That is probably he dropped the match. Well, you never know, Altaf. Just pinpoint silence as soon as he played the shot. And the next second, what we could say is an absolute dolly has been put down. You can't expect a much easier catch than this, but it's all pressure. Stepping down the track, it's a completely different game he's playing tonight, Lathan. I got to give credit to the bowler. It's really troubling with plenty of variations. Manzoor, so far so good. 5 deliveries, just conceded 3 runs, got a big wicket of Fawadullah. Trying to improvise, trying to go for reverse. He was very quick and he's going to retain the strike for the next of this. No double, just single. And leg by call by umpire after 2 overs, Victoria travels 10 for 2. Muzaffar 3 from 3 and Lithin just 1 from the 4 deliveries he played. They have only 4 overs now. They need to strike more than 10 from the remaining 4. They can get into a decent score. If anything more than 60, they will take it as a bonus. Now the fielding team is quite aware of the situation. They want to restrict the opposition team for less than 50. That's what going on in the captain's mind. Yummy Taste Restaurant. Sharfuddin, the skipper, finds
Another bowler into the attack, Shafiq. These are the pressure game. These are the knockout. The margin of error is very, very less. You got to have your best fielders in the right position, long on, long off. It's a huge gap you can see between the long off and the long on fielder is almost in the cow end of the ground. If Lithin can smoke one with a straight bat, you can find he was quite successful in terms of getting that straight boundaries last night. This time one-handed shot and it's played towards the mid-wicket. You get only a single. It's a very interesting action from this man, Shafiq. He's hiding the ball and going to that delivery, and it's very interesting. Have a look at this one. And you can call him as a mystery bowler because the batter has no idea from from where he starts off how his arm is going to come. Is going to be on top. The action. Swing and a miss. That's a dot ball. So what Muzaffir has to do is he has to try and get a little bit of pressure out of Lithin. Now definitely would be interested. As soon as he walked in, Lithin, after losing the first couple of wickets, he needs to play another very, very good innings. Can he release a little bit of pressure out of Lithin? Muzaffir can go for the counter attack here. They had to reach for the delivery. It's very far outside the off-stump umpire said he got to reload this one. 4 legal deliveries left in this over. And after this we'll have a strategic timeout as well, but they are running short of runs. Just 12 runs. 2.2. Swing and a miss, swing and a miss. It's nipped back in into the right hand batter. Here's two good bowler. These are the dot balls. Will definitely add more pressure to the batting team. It's a must-win game. It's a quarter final. They move to semi. They win this match. Big shot. Has he got enough? He got the height, not the distance. Straight to the man, making no mistake. Deep mid wicket was a catch, and another wicket goes. And Muzaffir has to depart, and we go for the strategic timeout. It's moving on 2.4 and 12 for 3. Having a little bit of break, and we'll be back very soon. And Victoria travels as the new batter walks into the middle. New man walks into the middle, Nazir. Score at this moment 12-4-3 from 2.4 overs.
about Shafiq and Mansoor getting each wicket, and they are really troubling the batters now. Within 2 from 5, and new batter Nazir. And Shafiq charging in. Right arm over the wicket to Nazir. Shot towards the offside, and he finds the fielder. Just single. A huge responsibility under the shoulder of Lithin. Once again, this time is batting first. Can he continue to attack? Trying to go for reverse, beaten with the pace and kept it very low by Shafiq. It's brilliant bowling. He considered just 3 runs so far. And that's a completion of this over. A 3 overs completed. Victoria Travel struggling. 13 for 3. 1 3 for 3. Now what we have in the second half of this innings. Time for them to change the gear. Need to make complete use of the next 18 deliveries left. So what they need from the remaining 3 is at least 40 runs or 45. Try to get into 50 at least. It's quite gettable from this. It all depends on Lithin how he's going to deal the pressure from now. And he's got a partner Nazir. And Mansoor into second over. Swing and a miss. Oh, this has been the story. Plenty of dot deliveries. Keep putting the pressure, really keep putting the pressure on the batting team. This time it's very wide. We got this single. 14 for 3 now from 3.1. Fuller length, played towards the long off. It's long off fielder. Right there in the boundary line for Lithin. And long on, little wide. Oh, right to his pad, it's block call. Is he going to come back? Is he going to come back? He's very keen to go to the batting end. And rightly, his partner sent him back. Somebody need to take a calculated risk here. Catches the goal. Tough one. One bounce to the field. Oh, it's beaten above that fielder. Deep extra cover. It's a welcome boundary for the batting team. When struggling, searching for that one. And finally, moved to 20 after 3.4. Nazir moved to 6 from 4. And Lithin searching for his first boundary. It's a pressure game. He is in good touch for sure, but this is a completely different game here. Got to give credit to the bowlers. They've done extremely well. Especially Mansoor, creating all the trouble for the batters. That's how you come back. That's how you come back. Brilliant bowling. Ask him the question. And umpire is not interested.
Shot selection is good and he'll get the boundary. Yes, that's in a vacant region. Plenty of work to be done for the fielder. The long off and he played through the gap. It's good shot selection. And now they started getting boundaries now. It's 2 boundaries. Victoria Travels moved to 24 after the completion of 4 overs. Now 2 more. And what they need to make is from the next 2 at least 25 runs, or more than that. They will take it as a bonus. If they can reach up to 60, that's going to be very interesting. Now this is a very important partnership for the team. And Nazir and Lithin reach up to 55 to 60. I reckon that's a good score. They got very, very good bowling lineup. Seven wickets left. 2 overs to play. Time for Lithin to do something very different here. And he's quite capable. He's looking very confident. He might have not got any boundaries, but he can change the game any time. So what they need is a good start for this over. There's 1 boundary to start. Otherwise, that's clever. Very clever bowling. Not getting the connection, that's the biggest worry for the dugout of Victoria Travels. Still searching for his first boundary. Just 2 from 8 for Lithin. That's a wise swing and a miss. It's all happening there. It's a different game now. They're feeling the pressure. Just 1 more over after this. Another one. Has he got it, Jet? Yes, he has to go back. That's not happening. This is not happening at all for Victoria Travels. Struggling at this moment. Kept on losing wickets in regular intervals. 25 for 4 from 4.3. Another batter back in the hut. Lithin still there. Let's have a look at the derivatives. Back of the length and good bounce. Trying to play across the line, getting an edge. And wicketkeeper making no mistake. So is getting a wicket as all the ball are chipping in and completely putting the pressure. Otherwise, 3 delivers, got a wicket. A new batter walks into the middle, Bilal. Another one. He got the height, not the distance. Easy catching. Oh, I thought he would have taken it. A second occasion, an easy catch has been put down. Lithin got a life in the very first over. That's with a very easy one. On this occasion, another one. Gripping away from his hand. 26 for 4. That's brilliant. Has cleaned him up. Was an inside edge. Lithin has to depart. This is brilliant bowling. This is absolutely brilliant bowling. They knew what exactly they were doing. From the very first over, Altaf, they started putting the pressure.
one of the team was pulled off the match in the last game in the pre-quarter. Maninello strikes again. Some brilliant bowling, 26, half of the man back in the hut. I got 1 over after this. They're in deep trouble. What a brilliant bowling performance from these guys. Let's have a look at Awais figure now. 5 deliveries, 1 run and 2 wickets. Another one, swing and a miss, and completed this brilliant over. With a dot and 5 overs completed, Victoria travels 26 for 5. And we can see players one by one leaving this ground from CCRC Warriors. Well done, guys. Congratulations once again. We'll see you tomorrow, CCRC Warriors, for the semi-final. We'll have to wait and see who are going to be their opposition team. Thank you so much, CCRC Warriors. We'll see you tomorrow for the semi-final. बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी. Move to the final over. 26 for 5. Victoria travels. Ideally, they have to score another 25 runs in the last over. Is it possible? Swing and a miss. Another one. It's a dot to start this over. Adnan to bowl the next 5 deliveries, and they are in deep trouble. Victoria will need boundaries. Catches the call and taken brilliantly by his own bowling. It's all happening there. They kept on losing wickets. Another man back in the dark. 26 for 60. Would you believe what's happening here? After the brilliant performance last night, it completely outplayed by some brilliant, absolutely brilliant bowling attack of the opposition team. Yummy taste of some yummy bowling. The late entry for DK. What he can do from the remaining deliveries. 26. 4 legal deliveries. Every bowler comes and chips in. They all are getting wickets, and Awais has done a tremendous job. 1 over, considered just a single, and 2 wickets. Straight away, trying to go for reverse. He finds the man there. The boundary line, just now he's coming back, chance for a run out there. It's going to be an easy one, and umpire had a very close look at it. Has he reached on time? Let's have a review here. Whether the ball was in his hand, and let's come back to you on the result. As umpire on screen, you can go with the decision. It's out. It's run out.
Finally, somebody's getting a chance to bat. Captain, jersey number 1, Riaz Bhai. It's going to be the non-strikers then. And TK needs to do something very, very different. Oh, that's a big shot. That's biggie. And he cleared the boundary in some style. DK. 7 from 2. That moves to 33 now. All of a sudden, this big 6, a much needed one for the batting team. Can they get somewhere close to 45? Too early for that, and it's a good variation. Pace off. Chance, big ball. Come on, Riaz Bhai, run. And has reached. Oh no, umpire says you got to go back. Keep on running, Riaz Bhai to the dugout. Tried his best to reach to the non-strikers, and it's not quick enough. Let's move to the final. Trying to go for reverse from the very first one, and he gets a single. It's going to be leg by called by the umpire. 34. That's the end of this innings. 1 run conceded in the last ball. Siraj V. Papan was the last batter. Walks into the middle. 35 for 8. And they come out to bat. Yummy Taste Restaurant. The Sneed 36 from exactly 36 deliveries. We'll be back very, very soon for the chase. 36 runs to win for Yummy Taste Restaurant to win this match and get into the semi-final. On the other side, it's a tough task for Victoria Travels to defend 36 from 36. Always difficult. At least 15-20 runs short of what they expected to make it. That's a very, very good bowling attack. Got to give credit to this Maninella. What a bowling performance. Everybody chipped in, and some brilliant, brilliant bowling. They deserve hands from their teammates and manager. Well done, guys. I'll have a very short break, and we'll be back towards the chase.
Yes, after a short break, we'll move to the chase. So every man of the match from the quarterfinal is going to get a lot of rewards in terms of the gift hampers from our sponsors Calicut Rahmat, and also Eco Fresh is giving away the gift hampers. Now it's a tough task ahead of Victoria Travels to defend this. 36 from 36. On the other side, Yummy Taste Restaurant, 2 opening batters. Got an easy task. They can just knock it around for ones and twos. They don't need to take any risk. It's an easy task and easy target to chase, and you will be into the semi-final. Hussain and Sahad, 2 opening batters. They're going to start with GK. Victoria Travels. Anand GK, as expected him to start the bowling. Got a 6 in the last innings that kind of provided them a little bit of score, just more than 30 runs. I reckon it's not enough. It is not enough runs. You need to have your special bowlers to do some miracle in terms of getting quick wickets right from the very first over, in case if they want to bounce back and come back to this game. At this moment, it is all Yummy Taste Restaurants are in a comfortable zone. The main umpire, Mr. Manzoor, is running towards the middle. So there we go, 2 umpires joins, and we'll have the chase. It's 11:25 p.m. right in here in Qatar. And a beautiful weather continues. You has a clear sky, 16 degree, feels like 12 to 13. And absolutely no wind. GK, right arm over the wicket to the lefty. Oh, straight away. Finds a fielder, the long on for the left-hand batter, off the mark. It's very simple for the batting team, just try to score from every ball, just singles and doubles, they can get through the line. They can always wait for the bad ball, they can punish. Mid on, mid off, inside the circle. Have a fine leg inside the circle. It's good bowling, that's good bowling. Good variation there, and it's a dot ball. They need plenty of dot balls. It's one of the ways they can bounce back, or they can come back, or just need to get little bit of momentum if they can produce as many dot balls they can. Good shot towards the covers, they get a single. Sahad and Hussain, 2 opening batters. 2 for no loss. Left it over, and it's a wide. Is adding more pressure. We cannot afford to have this kind of extra deliveries.
This time no signal from the umpire. It's swinging away from the left-hand batter. DK is a very smart operator. Trying to improvise. That's a wicket. That's a wicket number one. All of a sudden, they provided the breakthrough. What has happened? He was trying to go for a reverse sweep, getting an edge on wicket keeper. As Riaz by making no mistake, and as usual, you can see in always the day progresses. Match number 3, a black cat walks into the middle as well. I really wonder, he or she comes on time when we go to the game number 3, second innings. That's Fazlan. He was in good form. His job is very simple. Just be there. Try and make a partnership. Plenty of time, plenty of deliveries. They just need to be there. I don't need to take any risk at this moment. DK produced a much needed breakthrough. And Yamite's restaurant 3 for 1. Oh, that's a shot. That's the shot of the day. Straight to the screen. Oh, as we just mentioning about the form of this man, he was too good in the league games in the pre-quarter as well. He walks in and he says, thank you so much. A typical left-hand batter. Shot, flick of the wrist. And just had a look at it as soon as he played. It created a good sound as well. Straight to the LED screen. And that's how he started. 9 for 1. That's the completion of the power play. Pretty much in the chase. Getting just 1 run short of 10. 9 for 1. 27 to win from the remaining 30. Moving on, 9 for 1, and Fawadullah into the attack. It's quite capable. Pakistani pace bowler is going to create a lot of troubles. Plenty of various, very quick left arm pace bowler over the wicket. To Hussain. They got runs on the board in the first over. They got 9 runs in spite of losing the first wicket. Can they come back to this game? Rizvi, make a pardon. Said Riaz, the captain behind the stump. That's a brilliant bowling and equally well defended. They don't need to take any risk. Just wait for the bad ball you can punish. Hang around there for 1 or 2 overs, and this partnership you can really get through the line. Good connection
right in the middle of the bat. Bit of fumble from Lithin, and as actually expected all the fielders to feel the pressure. Swing and a miss. Oh, what has happened there? Keeper away from his gloves and he conceded. Oh, knocked him over, cleaned him up. That's a big wicket. Fazlan wanted to play across the line against a pace bowler charging in, creating that angle, is completely beaten, bang on the stump. Is that a wicket they've been waiting for? That is something. That's bowled him, cleaned him up. Oh, need to take all this kind of risk, and Fazlan is a too good batter. They just played across the line, maybe a little bit carried away. They are not chasing a huge score. It's just 36 from 36, and they when reached to 1.4, they lost already 2 wickets. Maybe they had a little bit of momentum after taking the big wicket of Fazlan. They need to keep trying. Edge and well fielded, the edge of the circle there. Another single. Thirteen for 2 after 1.5. Straight bat. Good sensible batting. Siraj V. Papan will cut it off, just a single. Come on, they need to convert those ones into twos. They cannot take it so lightly. 2 overs, just 14 runs coming. The first over they had 9 runs on the board. And for Victoria Travel, they have successfully taken the first 2 wickets. Is there any twist here? Siraj Papan is a too good bowler. He can create that dot balls. Tall man, wicket taker bowler. 1 or 2 wickets in this over. I'll tell you what, this is going to be very, very interesting. Manzoor 1 from 1 and Hussain 5 from 6. The next match is going to be between Malakand Stars taking on Target Killers. Can we have Zainuddin and Reyes? So fuller length and well defended. Requesting 2 captains, Zainuddin and Reyes from Malakand Stars and Target Killers. Please be here for the toss, guys.
Down the track and played well towards the long off. He'll cut it off. That's how they have to play. This is a tricky one. They don't have to take any risk. It's ones and twos. Trying to go for a reverse. It's not a good selection at all. The ball is seemingly away. It's a much better length, very good length, and still stealing a single on this occasion. The scoreboard ticking over. 16-4-2 from 2.4. And the record run rate is 20 from 20. Exactly 20 runs. Two is the call. Two is the call. Bit of fumble and racing towards the boundary. It was quite unnecessary. The fielder backing up. Tricky was there, but just not able to stop the boundary. It was coming with some speed. They moved to 20 and just 16. Mr. Zainu, Singham Zainu, please come here for the toss from Malakan's toss. Opposition team captain. Trying to go aerial on this time, not getting the connection. Three overs completed. Suraj Vipapan considered 6 runs. Now the strategic timeout after 3 overs, exactly 20 runs on the board. They lost 2 wickets. Yummy Taste Restaurant, they need to score at least 16 runs. That's from the remaining 18. It's quite gettable. A runner ball will take them through as long as they keep the wickets. On the other side, Victoria Travels will be searching for more wickets. They want to come back to this game. We'll be back very soon for the second half of this innings. For the next game, Target Killers had won the toss and elected to bat first against Malakan Stars. We'll quickly move to this last quarter final of ACL Season 3. And we'll come back tomorrow. We have only 3 matches. 2 big semis and 1 grand finale. As expected, Riaz Bhai is calling his best bowler, Fawadullah, into his second over. They need wickets. They need wickets. That's exactly they want. Right in the block hole. 2 is the call. And easily they can go back. Just need to stick it around there and go for the 1s and 2s. Keep wickets. I can easily get through the line and get into the semi-final. That's a good batting, very good batting towards the offside. It's a good drive down the track.
Up in the air. Who wants this? Tough one and well fielded. Kept the eye on the ball and stopped. A boundary there. Conceded only 2 runs. A quick throw as well. Toward the square leg on this occasion. Find the fielder. And is very keen to come back. Riaz has to be very, very quick. And let's have a review as he reached on time. There's a bit of work done from the skipper behind the stump. As he got the wicket. So now everybody's looking at the big screen there. Third umpire taking his own time. And skipper Riaz, has he got the man? Was he on time to the crease? Come back to you in few minutes, not even a minute, few seconds. Well, that wicket make a difference. It's taking really long time for the decision. And have a look at the skipper Riaz Bhai. What a brilliant work you have done. Getting the ball and bang on the stump. And a given out finally. A long time. Well done, Riaz Bhai. Was very confident there. Have a look at on the big screen. There we go. Never touched the ground and the bat was in there. And that moment, fraction of a second, Riaz was very quick to grab the ball and bang on the stump on time, and you have to go back. That's run out. It was indeed a very close call, and third umpire had a little bit of work here in terms of making the decision. Another wicket goes.
Let's get back to the equation. 10 runs required now from the remaining 14 deliveries. Yes, moving on. Fadullah. Has a punch of the back foot and finds the man. They just need 9 runs to win the match. Swing and a miss. It's a very good ball to end this over. 12 deliveries left and they need just 9 runs. The number of balls and the runs are getting much more closer now. Will there any twist in the tail in this game? You never know. And Lithin takes the ball. Can he perform with the ball? Didn't have the good outing when he came out to bat in this game. That's too good a bowler as well. Can he create some impact? Can he create some dots? And shift the momentum back to the bowling team. This pushes the man towards that backward point, goes to the deep in the boundary line. That's a good move. And fine leg inside the circle. Swing and a miss into the right and batter swinging in, and it is not a good selection. Still need 9 runs, and the distance between the number of runs required and the ball is very, very minimum. Now just 2. 11 and 9. Can they really come back to this game? Brilliant, absolutely brilliant from the champion player. Look at that. Captain comes all the way from the stump and he says, come on, we can do it. 2 dots. 10 and 9. It's getting almost close. Connects really well. And umpire raised his hand. That's a big 6. After 2 dots, he completely loses control. That's brilliant. That's brilliant batting. Swaroop. Just 3 to win. Can he come back, Lithin? Another 2 dots. The game is not over yet. They still believes they can do some miracle. Big shot, Siraj Popper! Wow! It's taken a blinder that one hand catch. Oh, would you believe that? Is there any twist in the tail? I can see the smile on your face, Altaf. Does it mean that there's no twist or there is a twist? There's no twist. But what a catch under pressure. 33 for 4 after 4.4. Wanted to clear the mid-off and just ended up in a beautiful catches taken there. Tall man. Good jump and well done, Siraj V. Papan. Pulled up something phenomenal. Yes, Swaroop has done the job for his team.
I will have to come back to you on that. 3. Have a look at this bowling. Lithan, 4 deliveries, considered 6. He had 3 dots and a 6. And the last ball was a wicket. All of a sudden, coming very close to the stump, almost all the fielder. Offside packed, leg side, short mid wicket. Smart cricket, very beautifully done. And racing towards the boundary, that's how you finish the game. Congratulations, victorious team Maninello. What a chase, it was just 36, and Victoria Travels just bundled out for 35, and Yummy Taste Restaurant winning this quite convincingly. A bit of tense movement in between, but nevertheless they have got through the line 37 for 4, an excess of 1 over and a ball to spare. Congratulations, Yummy Taste Restaurant, you are into the semi-final of ACL Season 3. We'll see you tomorrow. Well done, guys, and we'll have the man of the match announcement as well. Over to you, Altaf. Thank you, Mr. Shaza, and we will move on to the final game of the day, and it will be the last quarter-final match. The last semi-finalist will be spotted in few minutes. The last quarter-final match between Malaccan Stars the man of the match of the previous encounter between Victoria Travels and Yamites Restaurant, and it is Awais for his brilliant bowling performance, and we request
ways to come forward to collect the award, and we request the owner of Target Killers, Mr. Istiqan, to hand over the award to Awais. The man of the match presentation for the previous match. The Target Killer owners, Istiqan, will hand over the award to Awais for his brilliant, outstanding bowling display. And we move on to the last quarter-final match. It's Target Killers versus Malaccan Stars. Two openers walking in slowly to open the innings for Target Killers. It's going to be very interesting. The last semi-finalist. Already we have 3 names over there, and it is Yummy Taste Restaurant, CCRC Warriors. We'll have to see who will win this match, and BT Gang. Mr. Ramzika, please report at the mic point, commentary box. It was BT Gang in the first match today who are qualified for the semi-finals. Spot number 1. Then it was CCRC Warriors, the defending champions. And it was a low-scoring match. Yummy Taste Restaurants winning comfortably against Victoria Travels to qualify for the 3rd semi-finalist spot. And it will be 4th game here. In few seconds will be commenced, and it is Target Killers versus Malaccan Stars. And it is Target Killers batting first here in this match. We have the lineup: Sharik Munir, Farooq Munazir, Sarfaraz Muhammad, Shahidan Khan, Murad Sultan, Jahangir, Fazal Rashad, Zainuddin, Shamir, and then we have Daniel Archer and Arsalan Muhammad. And we have for Target Killers, Fayaz, last quarter final.
Send it to Riaz. First ball, it's a boundary. 4 runs. അതിമനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ റിയാസ് 4 റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു. It's out. First ball for second ball wicket. Welcome back, Senuka. Batsman Iflan. Send it to Iflan. Third ball of the first over. Send it to Fayaz. पांच रनों पे एक विकेट और ये मुकाबला भी काफी अच्छा होने वाला है. टारगेट किलर्स पहला झटका यहाँ पे लगा. बुलंद स्टार्स अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए. गेंदबाजी के लिए जैनू. लेग स्टंप के बाहर ज्यादा निकली. अंपायर के संकेत इट्स अ वाइड. स्कोर मूव्स ऑन 6. प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंटेशन क्रिकेट लीग डे 12 और ये क्वार्टर फाइनल, आखिरी क्वार्टर फाइनल, जहां पे आखिरी क्वार्टर फाइनल में दो टीम आमने सामने. मलकंद स्टार्स और टारगेट किलर्स. टारगेट किलर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 6 रन 1 विकेट और अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है पहले ओवर की. पहला ही ओवर शुरू है और कतर में जिस प्रकार से ये सर्दी का मौसम कुछ आज फिर से थोड़ा ठंडा ही हो गया. जैनू प्रयास के लिए इस बार गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर मूव्स ऑन 7. 7 पर 1. ओवर नंबर चलता हुआ ये पहला 4 गेंदें हुई है. हालांकि शुरुआती झटका जल्दी लगा है
क्योंकि हम टारगेट किलर्स की बात करें तो इनकी गेंदबाजी में काफ़ी दमखम है। कल इन्होंने जिस प्रकार से वलीद 11 को इस टूर्नामेंट से बाहर किया, वो मुकाबला भी काफ़ी अहम पूर्ण था। लेकिन आज, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबले हैं, कल प्री क्वार्टर थे, आज क्वार्टर है। ऑलरेडी 3 टीम हमें ऑलरेडी मिल चुकी है जो सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर चुकी है। चौथी टीम, आखिरी टीम होगी इस दोनों में से जो कंफर्म करेगी कि सेमीफाइनल कौन खेलेगा। कौन सी टीम चौथी होगी जो सेमीफाइनल खेलेगी? व्हाट अ बॉलिंग, थोड़ा सा धीमा आया गेंद। बल्लेबाज सरप्राइज हुआ कि भाई ये थोड़ा जल्दी आ सकता था, लेकिन गेंद का थोड़ा सा यहाँ पे मिश्रण, गेंदबाज जैनू। और अब तक का स्कोर 7 रन 1 विकेट। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। मलकंद स्टार्स वर्सेस टारगेट किलर्स, ये दोनों टीम आमने सामने। कमेंट्री बॉक्स से इनसे गेंदबाजी करे लगातार जैनू, और इनके पास मिश्रण है, वो मिश्रण को दिखाते हुए अब तक अच्छी गेंदबाजी। ओहो, फिर से बल्लेबाज को सवाल पूछा गया कि भाई आपके पास इस गेंद का सवाल है या नहीं। लेग बाय। पहला जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो बीटी गैंग वर्सेस यम्मी टेस्ट रेस्टोरेंट के बीच खेला जाएगा, और दूसरा जो सेमीफाइनल खेला जाएगा सीसीआरसी वॉरियर्स वर्सेस, इस मुकाबले का जो विजेता होगा उसके साथ जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो क्या यहाँ से वो सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम होगी जो सीसीआरसी वॉरियर्स के सामने खेलने वाली है कल? क्योंकि सीसीआरसी वॉरियर्स पिछले साल की विजेता रही है, इस साल भी उन्होंने क्वालिफाई किया है सेमी को, यानी वो पूरे जोश के साथ इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है। अब थोड़ा सा समय, अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए, लगातार अच्छे अच्छे मैचेस हमने देखे, हम अंतिम क्षणों में है। कल सिर्फ 3 मुकाबले बाकी है, जैसे हमारे साथी कमेंटेटर शेलजार भाई हमेशा कहते हैं कि अब क्लोजिंग सेरेमनी के आसपास हैं हम। अब तक का स्कोर 8 रन 1 विकेट। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। शारिक एक अच्छी खिलाड़ी है, हमने बल्लेबाजी में भी इनका दमखम देखा है। मलकंद स्टार जिस प्रकार से खेलती है, हमने डैनियल को देखा इस टीम के, जो प्रारंभिक बल्लेबाज आते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और काफी प्रभावित इन्होंने भी किया है। लेकिन आज ये आखिरी मुकाबले में क्या यहाँ से, हाँ, ये हमारे रियाज भाई वो हिमालय से यहाँ पे उतरे हैं, इसी कारण काफी शॉल्स उनके पास है, और मैचिंग वाली है अभी। ओवर नंबर दूसरा, शारिक, और सामने होंगे बल्लेबाज इफलान के लिए गेंद शार्क, और इस बार गेंद को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से छोड़ा, अगर थोड़ा भी होता तो मुझे लगता है गेंद शरीर पे जरूर लगती। अब तक का स्कोर देखा जाए 9 रन 9 ऑन बोर्ड। कल का कौन होगा, कौन हो वो 3 लकी खिलाड़ी है जो उस बाइक पे बैठ के जाने वाले हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले की ओर, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर लगातार खराब गेंदे, मैं कहूंगा शारिक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गेंद जहां पे करना चाहिए वहां पे कर नहीं रहे, और उनके कप्तान या फिर उनके खिलाड़ी उनके पास आ रहे हैं, कह रहे भाई आपको कंट्रोल करना होगा मिस्टर एक्स्ट्रा पे। स्कोर मूव्स ऑन 10 टारगेट किलर, अब स्कोर जाता हुआ 10। टारगेट किलर यही सोच रहा है वो 60 के आसपास चले जाए, हमारे पास गेंदबाजी काफी अच्छी है, ये उन्हें पता है। अच्छी गेंद इस बार जड़ में। बल्लेबाज को इस बार सवाल पूछा गया, बल्लेबाज के पास सवाल था, उन्होंने सिंगल खेला, 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन 11 ऑन बोर्ड। कुदरत का 18, इसका मतलब है हमारे मेन एसी का 12 13 16। शाहिद और डैनियल, ये 2 नाम बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार वाटर बॉलिंग, डॉट बॉल। टॉप पर अगर बात करें शाहिद फ्रॉम सीसीआरसी वॉरियर 116 रन,
और डैनियल 94। ये डैनियल का मुकाबला होने वाला है आज। और अगर आज डैनियल किस प्रकार से खेलेंगे आज वो देखना होगा। डैनियल हो यहाँ पे क्या कैच छोड़ा है कीपर ने। यही कह रहे शारिक भाई आपको कैच पकड़ना है। मिस। बहुत बड़ा यहाँ पे उलटफेर हो सकता था लेकिन अच्छी गेंदबाजी। फैयाज को लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। नंबर 18 इफलान की बात की जाए, नंबर 2 जर्सी नंबर 2। और अब तक का स्कोर और गेंदबाजी की बात की जाए, सलमान, जवाद और मुमताज ये तीनों बाहर है टूर्नामेंट से। उमर अफरीदी सीसीआरसी वॉरियर्स के और एक खिलाड़ी जो गेंदबाजी के मोर्चे पे, और सुहेल सीसीआरसी वॉरियर्स शफीक भी आउट है, तो सुहेल और उमर अफरीदी इनके बीच ये कड़ा संघर्ष हो सकता है। और इसी टीम के पीछे टारगेट किलर्स के मफास है और यमी रेस्टोरेंट के शफीक। देखिए किसी ज्यादा विकेट किसी गेंदबाज को नहीं मिले क्योंकि 8 यानी हम कहे 3-3 मुकाबले में तो वो कोई ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन रही है इस टूर्नामेंट में। शारिक गेंदबाजी के मोर्चे पे सामने होंगे अब फैयाज। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ग्लांस किया गेंद को, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए कलाइयों के साथ मोड़ा था। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर मूव्स ऑन 12, 12 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंदा निशेष। क्या गेंदबाजी हुई है। शारिक ने लगातार सवाल पूछे बल्लेबाजों से। अब तक इस ओवर में 4 रन। लास्ट बॉल ऑफ द सेकेंड ओवर। शारिक 2 खराब गेंदें लगातार की थी जरूर, लेकिन उसके बाद वापसी शारिक की। इस बार बड़ा स्ट्रोक और शारिक के ऊपर आक्रमण इफलान का। 6 रन, सिक्सर। और ये नो बॉल भी है, इसका मतलब सोने पे सुहागा। अच्छी गेंदबाजी की है, गेंदबाज को तारीफ पसंद नहीं आई। 7 रन है। स्कोर मूव्स ऑन 19। मुकाबला बदल रहा है। ये सिक्सर के साथ कहानी बदलेगी। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष। अच्छी गेंदबाजी अब तक कर रहे थे लेकिन अब 5 में 11 और फ्री हिट। इसका मतलब है बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका मिलेगा। लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर। ऐसा लग रहा था कि स्कोर नहीं हो रहा है लेकिन एक खराब गेंद मैच को पूरा बदल रही है। और इसके साथ ये ओवर समाप्त होगा। ये दूसरा 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पे लगे 19 रन। 2 ओवर 19 रन। हालांकि वो 7 रन काफी महंगे गए और वो 7 रन काफी महंगे हो सकते थे, लेकिन अब 2 ओवर 19 रन 4 ओवर का खिलाना बाकी। 17 मिनट आपके पास है, घड़ी के पास आपको देखना होगा। टीम मलकंद स्टार्स थोड़ा सा ध्यान रखे, अपना टाइम देखे। 4 ओवर के लिए आपके पास 17 मिनट है प्लीज। गेंदबाजी के लिए डैनियल। पहली गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी, डैनियल की अच्छी शुरुआत डॉट के साथ। स्कोर अब तक का 19। ओहो, डैनियल का स्वागत देखिए 6 के साथ। फैयाज अब थोड़ा सा चार्ज अप होते हुए 6 रन, सिक्सर। स्कोर मूव्स ऑन 25।
अच्छी गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, कवर ड्राइव देखने को मिला, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 7 रन, स्कोर मूव्स ऑन 26। एक एक रन काफी महत्वपूर्ण है, एक एक रन से गाड़ी आगे बढ़ेगी और अब तक का स्कोर 26। डैनियल टू अब इफलान ने भी एक सिक्सर खेला है, बाया और दाया, ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर है। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक इनटू द गैप, दो फील्डर है और उनके बीच में से निकल जाएगी, चौका, 4 रन, स्कोर मूव्स ऑन 30। लगातार अच्छी गेंदें लेकिन उसके बाद ही वापसी, ये ब्लैक कैट। स्कोर अब तक का 30 रन। इस बार ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से गया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, आवाज पीछे से आ रही है लेकिन उनके पे प्रेशर नहीं है, एक ही रन, 31। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। इस ओवर में भी 12 रन अब तक खर्च किए डैनियल ने, लेकिन वो वसूल करना भी जानते हैं। ये खिलाड़ी जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में खेला है, इनके नाम पे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, बल्लेबाजी से भी परफॉर्मेंस दिया है, तो इनके ऊपर भी आज थोड़ा सा ध्यान होगा सभी का। अब तक का स्कोर 31। लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। अब बल्लेबाज टाइम ले रहा है थोड़ा, फैयाज की बात कीजिए, 8 गेंदे के लिए 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें एक छक्का शामिल। लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को कवर ड्राइव खेला, 2 खिलाड़ी है वहां पे, पहला रन तेजी के साथ भागे लेकिन क्या पिकअप एंड थ्रो, बहुत अच्छी फील्डिंग शारिक। और रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चुका है, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाए, हम आएंगे 2 मिनट के उस पार। धन्यवाद। यस, टाइम आउट। रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हो चुका है, अब अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी, टारगेट किलर अब तक 32 रन। जैसे मैंने पहले कहा कि 60 प्लस तक जाने की कोशिश यहाँ से टारगेट किलर्स की होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मलकंदा स्टार्स के पास भी वो बल्लेबाजी में गहराई है, उनके 2-3 बल्लेबाज जिस प्रकार से ऊपरी जो बल्लेबाजी करते हैं, उनके पास वो क्षमता है कि वो 60 से ज्यादा रन भी चेस कर सकती है। तो मलकंदा स्टार्स के सामने 60 के ऊपर ही जाना ये अहम रहेगा। मैदान की ओर गेंदबाजी में परिवर्तन, फारूक के सामने फैयाज। ओवर नंबर 4 की शुरुआत, पैरों पे जरूर लगी है गेंद और यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे सेलेक्ट बाय, फील्डर वहां पे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं थ्रो करूं या नहीं। ओवर नंबर 4, प्रीमियर टेक्नो मीडिया प्रेजेंट एशियन क्रिकेट लीग सीजन 3 डे नंबर 12, आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल का।
ये फुल टॉस थी लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए। अंपायर के पास क्यों देख रहे, थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि भाई क्या ये नो बॉल है, लेकिन गेंद आपने कहा खेली, ये भी तो महत्वपूर्ण होगा। क्या अंपायर यहाँ से थोड़ा सा रिव्यू के लिए जा रहे हैं? बल्लेबाज जिस प्रकार से खेल रहे हैं वो मुझे लगा, मैंने ही पहले ही कहा कि ये बल्लेबाज बेंड हो रहे, इसी कारण वहां पे थोड़ा सा वो देखा गया का सारी चीजें को, और उसके बाद अंपायर ने कहा इट्स अ फेयर डिलीवरी। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ये अंदरूनी किनारा, और वहां पे किसी का सहारा 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 मिला है। अच्छी फील्डिंग है वहां पे, रोका गया है गेंद को, रोका गया है, रन बचाए गए। 3 रन यहाँ पे पूरे किए। रिप्ले में देखेंगे जरूर क्या हुआ है वहां पे, क्या गेंद को फील्ड किया गया है वो देखा जाएगा। इट्स अ सेव। अच्छी गेंद फिर से, इस बार लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, उनके पास आएगा, थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन गेंद को फील्ड किया है। 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38-38। ओवर नंबर 4 की, और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 38 रन, 1 विकेट, 38 लॉस ऑफ 1। इस बार छोटी गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश में निकलना चाह रहे थे, शॉर्ट फाइन ले गया, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, 1 ही रन। 39-39। इस ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अब तक फारूक, 5 में 6 दिए अब तक, उसमें 3 रन वो पीछे गए थे, वो भी भाग्य के 3 थे, क्योंकि गेंद ने निचला हिस्सा लगा था बल्ले का, लेमन कट, और वो लॉन्ग स्टॉप रीजन से गेंद को उठा के लाए थे। स्कोर अब तक का 39-39, लास्ट बॉल। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट। दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो 33 की वो पार्टनरशिप अब तक बनी है, क्योंकि पहला विकेट 6 पे गया था, और उसके 35 की पार्टनरशिप, 35 की पार्टनरशिप। अभी भी 2 ओवर का खिलाना बाकी, 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है। मलकंदा स्टार्स ये ध्यान रखे। शारिक फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है। यस, शारिक को ही बुलाया गया है। लास्ट 2 ओवर्स। पहले ओवर में 11 खर्च किए थे शारिक ने, फिर भी कप्तान ने उन पे ही भरोसा जताया है। ओहो, ये क्यों इन पे भरोसा जताया गया, क्योंकि 6 रन सिक्सर, शारिक के ऊपर आक्रमण। फारूक को एक और दे सकते थे मेरे हिसाब से, दूसरे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 रन सिक्सर, स्कोर मूव्स ऑन 45-45। शारिक की गेंदें थोड़े बल्लेबाज पसंद कर रहे हैं फैयाज। 13 पे 20। इस बार कैच, फिर से कीपर लगातार, और ये मुझे लग रहा है ये 5 है, 5 है, 5 रन है ये। कीपर ये क्या कर रहे थे वो समझ नहीं आया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कीपर ने क्या किया, ये कौन सी गलती है भाई।
कैच तो कैच छोड़ा, फिर 5 रन प्लस। देखिए ये दूसरे ग्लोव से उसे पकड़, ये मोए मोए हो गए उनके साथ। स्कोर मूव्स ऑन 40। स्कोर मूव्स ऑन 51। ये प्लस फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए जितना चाहिए था उतना। अब देखिए वो कैच छूटा तो कैच छूटा, 6 रन भी मिल गए, वो अलग चीज, और बल्लेबाज को फिर से मौका भी मिला। अब यहां से कितने रन वो बनाएंगे ये भी प्लस होगा। 52। और वो गेंद सिर्फ कीपर की तरफ गई तो भी 6 मिला, वो अलग चीज। इस बार अच्छा क्या ये कनेक्शन कैच है, लेकिन उससे पहले आपने जो गलती की उसकी सजा आपकी टीम को मिली है अब तक। 6 रन। स्कोर मूव्स ऑन 52। पावन। और अभी भी कौन से बल्लेबाज होंगे जो जाएंगे अब। सपोर्ट टीम का बहुत बड़ा अहम काम है वहां पे। पावन, साजिद, सचित, ये आक्रामक है, और अक्रम सजीत। और वो आक्रमण करना जानते हैं सजीत, आज आक्रमण कर सकते हैं वो। अब 52। फैयाज से कुछ बातचीत की और उसके बाद देखे दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है पहली बार जा रहे हैं बीच में, ओपनिंग के बल्लेबाज जा रहे हैं वापिस। टाइमर के हो पास, आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन बल्लेबाज, ये क्या हुआ भाई। टू लॉस ऑफ 2। ओ बॉल, साजिद आए और साजिद गए। वो धोनी फिल्म का डायलॉग, चिंटू जा रहे हो, चिंटू जा रहे हो, ऐसा ही कुछ हुआ साजिद के साथ। अभी अभी तो आए थे, अभी अभी क्या जाओगे। न्यू मैन इन, बोल्ड हिम। देखिए क्या वो तेज गेंद थी। 52 पे 3।52। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा। 53 लॉस ऑफ 3। अब टाइम की ओर देखो, टाइम आपके पास 4 मिनट है। 3:50, 3:50, 3:51, 3:50, 3:49। पच्चीस, 15, 15, 25। बाबू मुशाई
3-20 थोड़ा सा ध्यान रखे प्लीज। आखिरी 6 गेंदे, लास्ट 6 बॉल। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे और ये विकेट। और इफलान को फिर से स्ट्राइक से थोड़ा दूर रखेंगे, ये अच्छी चीज है गेंदबाजों की। शमीर आया और पहली गेंद पे विकेट लिया। और 5 गेंदे, लास्ट 5 बॉल्स। और हमारे रमजी भाई कड़ी सर्दी में भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि 3-3 जैकेट पहने हैं, वो अलग चीज है। और दूसरी जगह मंसूर भाई कंटिन्यू। जाते वक्त आपको क्या लेना है रमजी भाई, ये याद रखना है, एसिडिटी की दवा। बहुत बड़ी स्माइल है उनके चेहरे पे, बहुत बड़ी स्माइल। आखिरी 5 गेंदे, लास्ट 5 बॉल, किसके पक्ष में जाएगी ये? अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, लेकिन इफलान नो इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। उन्हें पता है कि मैं बड़े स्ट्रोक खेल सकता हूं, क्योंकि इफलान ने 12 गेंदे के लिए 16 रन बनाए। वो यही सोच रहे हैं कि आखिरी ओवर में कम से कम 2-3 सिक्स मारूं मैं। अब तक का स्कोर 54-54। चौवन पे 4, 54, लॉस ऑफ 4। टाइम देखो भाई, टाइम देखो, 1 मिनट, 4 गेंदे बाकी है। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में और ये विकेट। इफलान बैक टू द पवेलियन। और एक कतर में और एक कमेंटेटर का जन्म हुआ है, नए कमेंटेटर रमजी भाई। और एक कमेंटेटर बने, आप तो ऑलरेडी थे, लेकिन अब रियाज भाई भी बढ़ गए। बीच बीच में मुकाबला करते हैं, वो किसके साथ करना है मुकाबला वो पता नहीं। आखिरी 3 गेंदे, लास्ट 3 बॉल्स। इस बार गेंद को खेलना चाह रहे हैं क्रॉस द लाइन, डॉट बॉल। अंपायर इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे ये विकेट है। और बल्लेबाज सुरक्षित, बाय के संकेत। स्कोर 55, लॉस ऑफ 5। लास्ट बॉल, लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन फील्डर दौड़ रहे हैं। 1 रन, 2 रन नहीं, हिट विकेट, हिट विकेट हुआ है। इसका मतलब है 55 ऑन बोर्ड एंड अब तक 56 इज टारगेट, अब तक 56 इज टारगेट।
और अब तक 56 का क्या होगा ये हम सेकंड इनिंग में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक हम जाएंगे रियाज भाई के पास, वो गाएंगे बहुत सारे गाने। यस, मलंगन स्टार्स के प्रारंभिक बल्लेबाज जैनू और डैनियल बीच मैदान के अंदर जाएंगे और अब तक 56 का ये टोटल क्या वो आज चेस करेंगे और सेमीफाइनल में क्या सीसीआरसी वॉरियर्स के सामने खेलेंगे ये देखना होगा। लेकिन हम अगर इंडिविजुअल स्कोर्स की बात की जाए तो डैनियल ये भी नाम, बड़ा नाम है। कल इन्होंने जिस प्रकार से 50 वो बनाए थे कैच छूटने के बाद, वो 50 इनको थोड़ा सा इस रेस में और थोड़ा आगे लेके आए हैं। और आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आज हर दिन आपको वो मौके नहीं मिलेंगे कि आपका कैच छूटे और आपको रन बनाने का मौका मिले। आज आपको जिम्मेदारी वाला खेल खेलना होगा। अब तक 56 और टारगेट किलर्स के सामने क्या मतलब अंदर स्टार्स क्या वो 56 रनों का लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। 6 ओवर का मुकाबला है और 6 ओवर के मुकाबले में 56 रन, इसका मतलब है कि थोड़ा सा इस मुकाबले में जो औसत है 9 के ऊपर है। वो क्या स्टार्ट से ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे दोनों हमारे अंपायर मंसूर सर और दूसरी जगह हम रमजी सर, ये दोनों अंपायर अब बीच मैदान के अंदर जा चुके और कमेंटेटर अंपायर्स हमारे इंटरनेशनल स्कोरर्स रोब भाई हमारे साथ तैयार है। दूसरी ओर हमारे पास बाजू में बाएं तरफ है बिलाल भाई, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मूवमेंट्स है अपने कैमरा में कैद किए। हमारे दाईनी ओर और जयसल भाई जो इस टूर्नामेंट में
पूरी तरह से अपनी निगाहें हमेशा बैठाए रखते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे मन चले डीजे कुणाल जो एडिटर का काम कर रहे हैं, कैमरामैन मनीष निजाई थोड़ा सा बिजी होते हुए फिर से कैमरे के साथ, और मन जन्मेश मेहर जो काफी सर्दी को अपने शरीर के ऊपर लगातार सहन कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे इस सर्दी से। शेरशाद प्लीज कम फॉर द डकआउट्स। वनक्कम टू डकआउट। मलक्कन के डकआउट्स में आपको आना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे, पहला ओवर लेके गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज तैयार। मफास गेंदबाजी के मोर्चे पे, स्ट्राइक पे जैनू। पहली गेंद पे क्या प्रहार किया है, फील्डर है वहां पे लेकिन वो थोड़ा सा फंबल करेंगे, एक को दो में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जैनू ने ये कह दिया है कि भाई हम यहाँ जीतने आए हैं और जीतने के लिए खेलेंगे। पहली गेंद से शुरुआत, हालांकि कड़ी सर्दी है, 18 सेल्सियस 18, और अब तक का स्कोर 2 रन। अच्छी शुरुआत। फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में इस बार गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करना चाहा, डायरेक्ट हिट। ओ हो बल्ले पे लगी है, नहीं तो मंसूर भाई आपको बचना पड़ा, तो आपको लगती गेंद। अब तक का स्कोर 3। पहला ओवर डैनियल ऑन स्ट्राइक। अपने डैनियल के बल्ले से भी अच्छे रन आए इस टूर्नामेंट में, तो उनसे भी काफी सारी उम्मीदें होगी मलकंदा स्टार्स को। तो दूसरी जगह मफास किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे देखना होगा। एक बड़ा मुकाबला है क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला है। इसके बाद कल हम सेमीफाइनल्स में जाएंगे, सेमीफाइनल 1 बीटी गैंग्स, और दूसरी जगह हम यमी टेस्ट रेस्टोरेंट के साथ पहला सेमीफाइनल खेलेंगे, और दूसरा सेमीफाइनल सीसीआरसी वॉरियर्स वर्सेस। इस मुकाबले में जो जीतेगा वो सीसीआरसी वॉरियर्स के साथ खेलेगा कल। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 4 रन। पहली गेंद पे डबल, फिर सिंगल मफास पहला ओवर करते हुए पावर प्ले में 38 सर्कल के बाहर अगर खिलाड़ी देखे तो डीप कवर, डीप पॉइंट है माफ कीजिए, और डीप मिड विकेट एंड डीप स्क्वायर लेग। ये प्रेशर है दोनों टीमों पे। अच्छी गेंद थी, स्लो वन थी, बल्लेबाज पहले पढ़ नहीं पाए और उसके बाद पैर पे जाके लगी, अंपायर के संकेत आते हुए लेग पाए। स्कोर मूव्स ऑन 5। पहली गेंद बल्ले पे आई थी, 2 रन आए थे, उसके बाद फिर सिंगल, फिर डैनियल ने सिंगल खेला, अब एक लेग बाई। स्कोर अब तक का 5, गेंदे हुए 4। डैनियल फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार, बाएं हाथ के धुआंधार बल्लेबाज जाने जाते हैं, पहले अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट के। अच्छी गेंद, सौरभ गांगुली स्टाइल इस गेंद को खेला, डायरेक्ट हिट। ओहो हो, बहुत करीबी मामला हो सकता था ये। रीप्ले देखने के लिए मजबूर करेंगे हमें। देखिए यहाँ पे अगर ये गेंद लगती तो बल्लेबाज को नहीं, पहुंच चुके थे, तब तक पहुंच चुके थे। डाइव किया, ये उनके लिए सेफ था। पांच गेंदे, अब तक रनों की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लगे 6 रन। मुझे लगा कि ओवर खत्म हुआ, इतने जल्दी इतने आसपास क्यों आए? कौन सा वो मीटिंग था, छोटा सा मीटिंग, आखिरी गेंद, क्योंकि टाइम थोड़ा बचना चाहिए। और कीपर आए थे, सारे खिलाड़ी नजदीक आए फास्ट के। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, और इस बार गेंद रुकेगी नहीं, गोली के रफ्तार से निकलती हुई गेंद, 4 रन, चौका। मैं हमेशा कहता हूँ जो मोमेंटम आपके साथ हो ना सर, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये जब आप मीटिंग्स वगैरह जब करते हो ना, तो उसमें वो मोमेंटम का बदल जाता है, वो रुख हवा की तरह होता है, वो हमेशा अपना रुख बदलता रहता है। और ये 4 रन, मुझे नहीं लगता 5 गेंद के बाद कोई मीटिंग करने की जरूरत थी, लेकिन वो मीटिंग हुई, उसके बाद ये चौका आया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 10 रन। आने वाले 30 गेंदों में रन चाहिए अब 46।
30 balls remaining, 46 runs required to win the match. इसका मतलब है 9.20 के अवसर से बल्लेबाजी करनी होगी जब अब ये 5 ओवर जब बाकी रह गए। क्या मलकंदा स्टार्स जिस प्रकार से खेल रही है उनके कैप्टन जैनुद्दीन काफी खुश होंगे। अभी सर मैं बोल मलकन स्टार्स अब क्या यहाँ से ये स्टार्स अपना जलवा दिखाएंगे। मैदान की ओर चलेंगे गेंदबाजी के लिए। अब टारगेट किलर्स की तरफ से गेंदबाज रिफाज, सामने डैनियल। इस बार ये गेंद बाहर थी, क्या छेड़खानी करने की कोशिश की? यस की है, बल्ले का बाहरी किनारा और 1 रन। मुझे लगता है ये वाइड था, बहुत बाहर थी, बहुत। यही जैनुद्दीन कहते हुए वहां पे कि आपने वाइड गेंद को खेला है। स्कोर मुजाली 11। जैनुद्दीन पे काफी बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी का टॉनिक वो लेके चलेंगे। रिफाज, पहली गेंद खराब थी लेकिन बाल बाल बचे वहां पे। बल्लेबाज ने गेंद को छू लिया था बल्ले से। और अच्छी गेंद, इस बार बाल बाल बचे बल्लेबाज। अंदरूनी किनारा और थोड़ा सा किस्मत का साथ। स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड पे लगे 12 रन, 12 ऑन बोर्ड। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक। ओहो, जैनो ऑन फायर, 6 रन, 6 और ये स्टार्स अब अपना जलवा बिखेरती हुए। स्कोर मूव्स ऑन। नाइनटीन ऑन बोर्ड। फिर से आड़े बल्ले से खेला, इस बार 2 फील्डर दौड़ रहे हैं और उनमें गेंद ने उनको चकमा दे दिया। 4 रन, चौका। 23 रन, 23 ऑन बोर्ड। थोड़ा सा जल्दी में रख रहे मलकंद स्टार्स और वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। अब तक का स्कोर 23 रन। थोड़ा सा बातचीत हो रही है और अभी भी इस ओवर की बात करें तो इस ओवर की गेंदें हुई है 5। लास्ट बॉल, अभी भी 33 की जरूरत है। 25 गेंदे, 33 रन रिक्वायर्ड। 24 बॉल्स रिमेनिंग, 33 रन रिक्वायर्ड। या इन दोनों ने जिस प्रकार से शुरुआत की है, क्रैकलिंग शुरुआत। चौके और छक्के के फटाके फूट रहे बीच मैदान पे। रिफास किए गेंद, बल्लेबाज को समझ नहीं आया। डॉट बॉल। 24 गेंदे, 33 रनों की जरूरत 24 गेंदों में आने वाली।
मजा आने वाला इस मुकाबले में, और आप जरूर इस मुकाबले को देखते रहना, क्योंकि इसका सीधा प्रसारण ACL दोहा आप तक लेके आ रही है, साथ ही साथ श्री लाइव वीडियोस। अभी भी आपने अगर ACL दोहा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल के दिन एक लकी सब्सक्राइबर को एक मेगा गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। वो मेगा गिफ्ट हैम्पर क्या होगा, ये इसका सरप्राइज आपको कल देखने को मिलेगा, लेकिन एक वो जो लकी सब्सक्राइबर होगा जिसको वो लकी गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। पहली गेंद और डॉट, अच्छी शुरुआत, गेंदबाज मफास फिर से शुरुआत करते हुए अच्छी। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक, और रमजी भाई को एक पैर पे खड़ा रहने का प्रैक्टिस देना पड़ेगा अब। अच्छी खिलाड़ी है वो, अभी भी छक्के चौके लगाते हैं। टेक्नो मीडिया स्टार्स को अगले साल प्लेयर की अगर जरूरत पड़े तो आइकॉन खिलाड़ी के रूप में आ सकते हैं रमजी भाई। का स्कोर 24-24। जैनुद्दीन बल्लेबाजी के लिए तैयार, ये धीमा गेंद था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, डॉट बॉल। 21 गेंदे 32 रन। अच्छी गेंद, फिर से डॉट, 20 गेंदे 32। वफास टू जैनू, बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से और छोड़ दिया। ये कैच छोड़ना इसका मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अच्छा प्रयास था, और हमारे पास रियाज है। और चाय की चुस्की लेते लेते हुए हमारे जयसल भाई फिर से कमेंट्री बॉक्स में, चाहे वो ठंडा चाहे वो 25। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, वहां पे पहला रन तेजी के साथ भागे, 1 रन मिलेगा, दूसरे की मांग, खराब फील्डिंग और 2 रन पूरे। खराब फील्डिंग, चौका गया, 2-2 जा रहे हैं। रेड एप्पल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चुका है, और आने वाले 18 गेंदों में रनों की बात करें तो रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 29। 18 गेंदे 29 रन, 29 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स। बजाओ डीजे।
आखिरी 18 गेंदे, रन चाहिए अभी भी 29, 18 गेंदे 29 रन, 29 रन रिक्वायर्ड, 18 बॉल्स, 18 में 29, मजा आने वाला है। गेंदबाजी में परिवर्तन, रिकास, पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, छोड़ दिया। ये भाई आज इन्होंने क्या वड़ा पाव खाया है, हाथ में तेल ऐसा ही रखा है, कैच छोड़ रहे, गेंद आ ही नहीं रहे हाथ में। रिफास, 2 रन चले गए, अब रन चाहिए 17 में 28, एक ही रन गया है 17 में 28। ये देखिए उनके जो सारे समर्थक है वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि कैच छूट रहा है फिर भी उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं भाई हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, ऐसा एक महान कलाकार ने कहा है, एसआर की स्टेन रिमूवल किंग। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, 16 गेंदे 28 रन। आज डैनियल का बल्ला नहीं चल रहा है, डैनियल का बल्ला खामोश है, 8 गेंदे खेली है, 7 रन अब तक। और दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो कल से ये 98 की पार्टनरशिप है इस टूर्नामेंट में अब तक। ओ बल्लेबाज को जगह पे खड़ा कर दिया है, डॉट बॉल, 15 गेंदे 28 रन, 15 बॉल्स रिमेनिंग, 28 रन रिक्वायर्ड। अब ये गर्म मुकाबला है, हालांकि यहाँ पे ठंडा है कतर में, लेकिन ये गर्म मुकाबला, ऊपर हमारे मनीष थोड़ा सा ठंडा ज्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला गर्म हो रहा है। 15 में 28, फिर से गेंदबाज तैयार, और इस बार अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो पूरा करेंगे, 1 पे संतुष्ट। 14 बॉल्स रिमेनिंग, 27 रन रिक्वायर्ड। इस ओवर की तारीफ करूंगा गेंदबाज विकास, क्या गेंदबाजी की अब तक, 4 में 2 सिर्फ। चार में 2, व्हाट अ बॉलिंग विकास, उसमें कैच छूटा है वो भी महत्वपूर्ण था। जैनू, डॉट बॉल, ओहो देखिए यहाँ पे वो फील्डर जितने एक्साइट नहीं है, ये दर्शक एक्साइट है यहाँ पे, व्हाट, क्या दर्शक है यार, आप तारीफ करूंगा यार, क्या सपोर्ट किया है टीम को, थोड़ा सा टीम झगड़ रही थी लेकिन क्या सपोर्ट किया है। और ये टारगेट किलर्स है, ये किल करना जानते हैं। और अब लास्ट बॉल, इस बार गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेजा, 6 रन। और अब ये दर्शक थोड़े से नाखुश, 12 गेंदे 21 रन, 12 गेंदे 21 रन। कैच छूटने के बाद क्या होता है ये देखा हमने, विकास अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन 6 रन, 12 बॉल्स रिमेनिंग, 21 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 12 गेंदे 21। टारगेट किलर्स के दर्शक थोड़े से नाराज है अपने गेंदबाज से, क्योंकि 5 गेंदे अच्छी डाली और आखिरी गेंद बल्ले के बीचों बीच 6 रन, 12 में 21। हमारे रियाजा थोड़े से फिर से बिजी हो गए मोबाइल में। बारह गेंदे 21, टाइम की ओर देखिए, हमारे जन्मेश में टाइम दिखा रहे हैं यहां से, वो कह रहे हैं कि टाइम की ओर भी देखें, क्योंकि अब कतर के 1:03 हो चुके हैं, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग कहने का मौका मिलता हुआ हमें। ऑर्गेनाइजर हमेशा कहते हैं कि भाई 7:30 बजे मैच चालू होना चाहिए, लेकिन फील्डर वैसे कुछ करते ही नहीं। हर मुकाबले को अगर 1 घंटा भी पकड़े तो 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक मुकाबले खत्म होने चाहिए, लेकिन 1:30 तो रोज बज रहा। इट्स 1 o'clock। बारह गेंदे 21 रन,
ये पहली गेंद है वाइड, बैंक बैलेंस कम, खर्चा ज्यादा, वाइड वाइड। स्कोर मूव्स टू 36, 36। 12-20। फैयाज इस बार फिर से वाइड, ये कीपर ने कहा रिव्यू। इट्स वाइड, काफी लाइन के बाहर है। अब 12 गेंदे, रन चाहिए 19। स्कोर मूव्स ऑन 37। 12 में 19, मुकाबला बदल रहा है। कैच छूटे हैं उसका मतलब है। फिर से वाइड, ये तीसरा वाइड। और डैनियल, क्या कहना आपका? 6 रन सिक्सर। स्कोर की बात करें, ये क्या ये सिक्सर है? व्हाट अ बैटिंग। फिर से बड़ा स्ट्रोक, फिर से सिक्सर। अब ये समय बचा रहे। 50 का आंकड़ा पूरा। वेल प्लेड। 50, 40 मतलब स्टार्स। 6 की जरूरत। विनिंग स्ट्रोक। सेमीफाइनल में पहुंची है टीम मलकंद स्टार्स और ये सबसे ज्यादा रन करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं डैनियल। वेल प्लेड डैनियल, वेल प्लेड। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी ये पहुंच चुके हैं। वेल प्लेड। मलकंद स्टार्स पहुंच चुकी है सेमीफाइनल्स में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल प्लेड टारगेट किलर्स, वेल प्लेड।